Hi, good morning, everyone. I hope all of you are doing well and you are able to hear me clearly. So, once you give me a go ahead, I think I can start with the session. And I already see that we already got a question. So, I had thought of doing it in two legs. So, one was, of course, we hadn't really invited questions, but we already had a lot of questions from people through LinkedIn, on our YouTube video comments, and everything. So I have tried to incorporate that into a short presentation. I have some six, seven questions here. So we'll be doing it in both levels. So one, I will try to go through all the questions in my presentation. It's fairly straightforward. All the questions I'm sure you would have. So I have some seven questions that people have asked repeatedly over the last couple of weeks or so. And then, of course, whatever is there in the chat, I can handle those questions as well. So we will, that is basically what we'll be going through today. Just give me a confirmation in case you are able to hear me. Yeah, perfect. Okay. I got the go ahead. So, okay, just let me set up my phone so that I'm able to have a look at your questions. Okay, perfect. Okay, chalo. So I have got a question already from Roshan. So Roshan, what I'll do is I'll answer your question because till the time people join, at least I can answer the question and then I can start with the presentation. So 84 in 10th, 89 in 12th, 69 in BSc, 89.27 cap calls, but wasn't able to convert, and CAT 24 preparation, third attempt. Okay. Internship of work is safer percentile. Yeah. So again, assuming that you're a general candidate, your profile is fair. I would not say it's bad. I would not say it's exceptional. Okay. So ABC might look slightly difficult, especially with a lower percentile. So that is my reading of the situation. But if you look at your the thing that you had got cap calls at 89 percentile, let's say, so this year, of course, you are still going to get those cap calls that are there. उसके साथ में maybe if you get a really good score at the CAT, you can expect something like an Indore or a Kozhikode or a Shillong for that matter, especially if they change their criteria. तो वो अगर होता है, तो definitely you will have a shot at some of the older ranks. I would not say ABCL, तो थोड़ा difficult हो सकता है, but at least an IKS kind of a thing should be possible. Second generation IIMs में से some should be possible. तो वो वाला part is sorted towards IIMs. ये हो जाएगा is what I think is going to happen. In terms of the percentile that you got 89.27, now of course 89.27 90 percentile अगर देखते हो तो वहां से लेके 97 98 percentile तक भी जाना है तो the journey is not, it's not too far away, right? The target is not too far away. It should be manageable. So if you have clear cut areas which were a concern last year, जिसपे for some reason you are not able to work or you did not realize that those were the areas that were an issue, then definitely you need to work on those things. वहां से 95 percentile तो cross हो सकता है, right? And once you cross that number 95, 96, 97 percentile cross हो जाता है, you will also have a shot at other institutes through CAT, which I would like to believe कि MDI, IFT are the ones जहाँ पे you can still have a shot with your profile as well. तो हो सकता है, that is a possibility. Similarly, some of the IITs, if they open again, IIT Madras, let's say for example, if it opens, if it keeps its doors open to non-engineers, again you might have a shot at those things. And in addition to that, what I would strongly suggest is for you to take other tests as well. क्योंकि getting into a third generation IIM versus getting into an NMIMS or even an SIBM, SCM, HRD kind of a setup, वो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी डिसीजन हो सकता है, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल चूज एन एसआईबीएम और एन एससीएम एचआरडी और एन एनएमआईएमएस मुंबई over the third generation IIMs. So make sure that वो वाला option is also open. You're also taking the NMAT, you're also taking the SNAP, you're taking the ZAT for sure, because that does not really look at your past accounts very aggressively, and the test is such that it is very uh, I would say open, right? It's very leveling, so to say. तो बहुत सारा preparation करके ZAT crack करना is not really a certainty. So that's why I would strongly suggest for you to take at least these three tests. उसके बाद you can take a call where you are in the month of December or so. उस time you can take a call and think about maybe tests like the MyCat or the CMAT or the CUET or the CET and so on. But अभी के लिए तो at least focus on these four tests is what I would strongly suggest. And ये colleges का जो list बताया, try to look at those. If you are consistently scoring in the 85 or 90 percentile at the mocks this year, I think this should be a much better year for you compared to what happened last year. ठीक है? So, okay. Shubham, thank you so much for that. It really means a lot. Yeah. And
Okay. Rishabh has asked a very nice question. So I'll just take a few questions and then we will start with this. So Rishabh has asked a nice question which I intended to cover at a later point in time. So how to avoid forgetting previously learned concepts while moving on to newer topics in quants, right? So ये बहुत बार होता है. I'm pretty sure this has happened to a lot of you. You start with a topic, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा, you practice 30, 40, 50 questions from that particular topic, एंड देन सडनली यू रियलाइज कि अरे नेक्स्ट टॉपिक में चला गया, तो वो पीछे वाले में कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में वन प्लस आर रेस टू एन था कि वन प्लस आर रेस टू एन माइनस वन था एंड सो ऑन, राइट? तो ऐसे कुछ रैंडम चीजें होती है लाइफ में, आई कंप्लीटली अग्री. So what you can do is you can look at it at two levels. I generally recommend people to look at it at two levels. The first level is in terms of the core concepts slash formulas that you're going to learn. तो बहुत सारे concepts you would have been learning, a lot of formulas you would have been learning, उसको याद रखा होगा, right? But you can't trust your brain. Nobody can trust their brain, right? Even I can't trust my brain to do the entire heavy lifting. तो मैं क्या करूंगा उसके लिए? What I will do is every time I come across a formula, ठीक है? What I can do is I can take a screenshot of that particular formula. I can so I'll do one thing. I'll just increase the size. All right, yeah. So what I will do in this particular context is I will take a screenshot of that formula. I'll put it in the form of presentation, right? So a lot of years when I used to teach people, 2015, 16, 17, जब से CAT के लिए formally I have started teaching people. Every year I sort of made this observation or made people do this thing जहाँ पे what they will be supposed to do is they will be supposed to मेंटेन अ प्रेजेंटेशन. तो एक पीपीटी बना लो, राइट? पूरा जिंदगी पीपीटी बनाने आगे जाके, वंस यू आर एन एमबीए. सो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू इज एक पीपीटी बना लो. पीपीटी के अंदर कीप ऑन ईदर टाइपिंग और टेकिंग अ स्क्रीनशॉट एंड पुटिंग इट इन दैट पीपीटी, वन स्लाइड आफ्टर द अदर, वो करते जाना. तो जैसे ही कोई एक नया टॉपिक सीखे हम, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू लर्नड दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ. लेट्स से ये एक मैंने कुछ एक फॉर्मूला सीख लिया, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज आई विल पुट इट ऑन अ स्लाइड. और ऐसे जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ता जाऊंगा, जो मैं सीखता जाऊंगा, आई कीप ऑन पुटिंग इट ऑन दीज स्लाइड्स. दैट इज व्हाट आई शुड बी डूइंग, right? Now depending on your bandwidth, depending on how much work you have, how much capacity you have, every 2 or 3 days have a look at this presentation. उसको फुल स्क्रीन कर देना अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे. कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड एंड कीप ऑन रिकलेक्टिंग. अच्छा ये वाला थियरम था, ये वाला फॉर्मूला था, दिस इज बेसिकली वेयर दिस हैपेंड, एंड कीप ऑन लुकिंग एट इट. लाइक राइट, सो लाइक यू रिमेंबर एनी सॉन्ग, लेट्स से फॉर एग्जांपल, रिपीटिशन विल बी द की टू रिमेंबरिंग इट प्रॉपर्ली. तो ये करते रहना है अपने को. यू हैव टू कीप ऑन डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड रिपीटिशन के बाद आफ्टर 15 days, a month or so, it will get imprinted. Then you will be able to predict कि अरे फर्स्ट स्लाइड पे एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स था. सेकंड स्लाइड पे इसके बाद क्या आता है पता है? एलसीएम ऑफ ऑल नंबर्स प्लस रिमाइंडर इज दैट कॉन्सेप्ट दैट आई हैड लर्न. एंड दैट इज बेसिकली हाउ यू बिल्ड एसोसिएशंस इन योर ब्रेन. तो एक तो ये फॉर्मूला के लिए ये चीज कर लेना. सेम थिंग यू कैन डू फॉर योर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एज वेल. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू टेक अ मॉक या फिर यू अटेंड अ डेली ड्रिल एंड वहां पे क्वेश्चन देखा which you might not have been able to solve at first glance, but बाद में it suddenly started making sense to you. ठीक है? तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट अगर है तो वहां पे what you can do there is again take a screenshot and keep it in a presentation. अगर प्रेजेंटेशन बनाना बहुत ज्यादा फाइट लग रहा है, if you do most of your reading or learning on your phone, again you can take a screenshot and create a WhatsApp, let's say for example a group of your own, let's say, right? One person group बना सकते हो WhatsApp group, एंड उसके ऊपर यू कीप ऑन जस्ट डंपिंग थिंग्स, एंड उसको एक बार देखते रहना. उसका मीडिया जो है वो हमेशा देखते रहना. इवन दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू. सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड रीलर्न वट एवर यू हैव लर्न अर्लियर. तो उसका बार बार वो रिव्यू मिलता रहेगा, बार बार रिकैप मिलता जाएगा, एंड सो ऑन. एंड आफ्टर पॉइंट इन टाइम दिस एक्सरसाइज विल बिकम वेरी फास्ट. इसका सेकेंड एडवांटेज फॉर ऑल दोस ऑफ यू इज फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसके अंदर यू विल सी द एक्सटेंड. तो हमको जो चीज पता नहीं होती ना, वी जनरली अज्यूम दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी लार्ज, इट्स वेरी इंटेंस, ये हमको लगते रहता है. वी जनरली टेंड टू ओवर एस्टिमेट द लेवल ऑफ डिफिकल्टी और द लेवल ऑफ एफर्ट दैट एग्जिस्ट. हम लोग अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करते, हम लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं चीजों को मोस्टली, राइट? जब हम कुछ कर नहीं रहे. So writing this down on your presentation will show you that your entire cat con का presentation is barely 250 slides. ठीक है? तो वो 250 कॉन्सेप्ट अगर मैंने कैट में कर लिए, आई एम ऑलमोस्ट श्योर ऑफ गेटिंग अ 95 98 प्लस परसेंटाइल एट द क्वांट सेक्शन. ये मेरे को 100% पता है. ठीक है? एंड दैट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस कि अरे 250 स्लाइड्स ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब इतना सारा कॉन्सेप्ट है जो मेरे को पता ही नहीं है, राइट? एंड दैट इज बेसिकली हाउ यू कैन improve your psychology as well. So that is something that I have suggested over the last many years. People have benefited. So you also should do something like this to have that ready reckoner in front of you. It will act as a virtual notes kind of a thing, and you can keep on revising it every second or third day. Karna, matlab. Don't do it once a week. It's too large a gap.
but every second day, so you can say Tuesday, Thursday, Saturday, रात को सोने के पहले I will go through this presentation. या फिर you can say that I will do it on Wednesdays and Saturdays. उतना ही करना. Don't do it, don't stretch it beyond that is what I would strongly suggest. ठीक है? Okay. Roshan, you have issues in VARC, especially in RCs. So, Roshan, one thing, one spoiler for all of you. Over the next week, 10 days or so, I intend to make a video जहाँ पे we will be looking extensively at all the questions at the past year CAT papers, जहाँ पे the choice was between two options. ठीक है, एंड वहां पे क्या क्या ट्रैप्स सेट कर सकते हैं. सो आई वांट टू डू समथिंग ऑन द काइंड ऑफ traps that are set in cat tests over the or cats over the last many years now, and कैसे मतलब how are you fooled into believing that one option is the correct answer whereas it is not, right? So that is something that I intend to do. But at this point in time, agar RCs is an issue, the only thing that I would strongly recommend you to do is not mark anything till you're absolutely certain of the answer. अगर मेरे को 100% नहीं पता कि यही आंसर है, मैं मार्क नहीं करूंगा, राइट? व्हाट यू कैन डू इज, अगर पता करना है कि ये राइट होता है या रॉन्ग होता, राइट इट ऑन योर रफ शीट. रफ शीट पे लिख दो कि मैं इसका आंसर ए मार्क करता, बट आई हैव 80% कॉन्फिडेंस इन दिस, नॉट 100% कॉन्फिडेंस. इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस फॉर मे बी 4 5 मॉक्स, अगर ये 4 5 मॉक्स के अंदर या सेक्शनल्स के अंदर इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस ना, यू विल नो योर बेस लाइन. The problem with people and VARC is that they don't know what their baseline is. If you ask me कि अरे मतलब on an average day, if I go for the CAT and एक average sub section है and it has 24 questions, what is the score that I can expect? ठीक है, अगर ये मेरे को कोई क्वेश्चन पूछे, I know that irrespective of whatever happens, मेरा स्कोर 30 to 35 के बीच में आ सकता है. That is something that I have told myself. That is something that I absolutely certainly know about how I attempt the test. Worst case में भी मेरा accuracy 50-55% के नीचे नहीं गिरेगा, उतना मेरे को पक्का पता है. Right? So whenever I'm estimating my percentile as well, or percentage or my score as well at the end of a live mock or whatever, I'll always have that benchmark of 30 that is there. उसके नीचे generally मेरा score नहीं जाएगा. That is what I have told myself. जा सकता है but generally नहीं जाएगा. Right? So that benchmark I have realized after years of taking tests, after years of appearing for sectionals and so on. तो वो एक benchmark बना लेना, even if it is 3 questions, 4 questions, 5 questions, it's perfectly okay. But you should know that मेरे 5 question 100% right होने चाहिए in VARs, right? And that will come with practice. So first try to get accurate. Don't try to improve your reading speed all of a sudden, क्योंकि reading speed improve करना is not a mandatory criterion, but understanding the question stem and answering the question is a mandatory criterion, right? So speed पे बहुत ज्यादा ध्यान मत देना. I would be perfectly okay if you solve only one RC and 3 parajumbles. चलेगा. Do only 7 questions. It's perfectly okay. But get 7 out of 7 right. Worst case 6 out of 7 right. उसके नीचे मेरा accuracy जाना ही नहीं चाहिए. Spend 40 minutes doing these two things. चलेगा, कोई problem नहीं. But get those 21 marks. Now I know that you are perfectly capable of getting 21 marks. You know you are perfectly capable of getting 21 marks. उसके आगे का journey becomes much easier for you. ठीक है? So make sure that you are doing that on a consistent basis. एक बार वो करते रहोगे तो definitely the other things will take care of themselves. Then you need not worry about मतलब falling below that level. वो तो बहुत improbable हो जाएगा फिर. ठीक है? So do that, and of course for the traps and for the various things that are there at the CAT जहाँ पे मतलब options are very close, or where they simply pick up a particular phrase from a passage and put it in the option and completely twist the second part. So we had seen something similar. We had seen something similar in the verbal ability daily drill that we had done recently. जहाँ पे I made a statement, right? It's a popular meme. Had us in the first half, not gonna lie. So it was that kind of a thing. First part of the option was absolutely perfect. Second part में पूरा घुमा देते हैं. So those kind of traps I will be discussing in the video. So stay tuned. Over the next 7 8 days, I think I should be able to deliver something on that front. ठीक है? Let's look at some more questions. Um, am I planning some course for 2024 aspirants in the coming days? Maybe some booster course. Yeah, Fatima. So I'm planning absolutely the same thing that I mentioned there. So I'm planning to have some workshops kind of a thing that will give you a boost in terms of uh, reaching a certain level, right? So people who have already joined an institute, let's say for example, and they are very happy with overall how things are going on, but they need that push when it comes to jumping from that 70th percentile to the 90th 95th percentile. वो boost के लिए there are specific workshops that I have in mind. Around the mid of August, I think you should be able to see some activity on that front. So that is what I'm planning to do. But of course, there is a lot of content involved, and I want to ensure that everything is in place before I launch something. So that's why I'll be doing it somewhere in the month of August. But yeah, good suggestion.
686 and 95 percentile, top B school. Rishabh, definitely possible, right? In fact, I was talking to one of my students who is currently at IIM Shillong with I think a 766 kind of a profile. So more or less similar profile to what you have. So one, you have to be dependent on the institute to relax their criteria by a bit. But then again, you also have to be very forthcoming in the interview. You have to not necessarily be scared of your profile. You just have to justify it to a bit and then say that you have moved on from that, right? That is the more important thing. You have learned from the mistakes in the past. If you are an exceptionally bright candidate who has good interview skills, they might still consider you, right? So it's not going to be everything is not going to be lost in your case. Sirf because your profile is 686, उसको justify करना. You have learned something from it or not? That is the more important question. अगर मैंने उसमें से कुछ सीखा है, if I have built content, let's say for example, you might not have done well in a couple of subjects in your graduation, let's say. ठीक है, तो वो सब्जेक्ट्स में अगर ग्रेजुएशन में अच्छा काम नहीं किया है, बट आफ्टर दैट एज वेल योर प्रैक्टिकल नॉलेज इज स्टिल बेटर, लेट्स से, या फिर यू हैव मे बी स्टडीड दो सब्जेक्ट्स बिकॉज यू फेल्ट पैशनेटली अबाउट देम, बिकॉज यू फेल्ट बैड अबाउट योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू कवर ग्राउंड एंड यू आर डूइंग रियली वेल एट योर वर्क प्लेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ अगर स्टोरी है ना, तो दो स्टोरीज आर ऑलवेज good. So make sure that even if you have not done well in acads, you don't say that it is you don't convey it to the panelists that ये मतलब हमेशा का ही सीन रहा है, आगे जाके भी ऐसे ही कुछ होगा, ऐसा नहीं है. I definitely have the potential to work on my shortcomings and आगे जाके definitely I'll do better, right? Remember one thing, after 10 years 15 years nobody is going to ask you कि 10th standard में कितने marks मिले थे, 12th में कितने marks मिले थे. Nobody is going to bother you about your 10th 12th standard scores. Why are they not going to bother you about your 10th 12th standard scores? Because they will be looking at the kind of work that you have done over the last 10 years. ठीक है, तो 10 साल में जो काम किया ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने कौन से रोल्स हैंडल किए हैं, कौन से ब्रांड्स के साथ आप एसोसिएटेड थे, किस टाइप के रिजल्ट्स आपने डिलीवर किए हैं, दोस काइंड ऑफ थिंग्स विल मैटर मोर मे बी 10 years down the line. So why not accelerate the process and use the same template यहाँ पे, right? So instead of focusing on 686, focus on what you have learned, focus on what new skills have you acquired, focus on some MBA specialization that you intend to pursue. ये सारी चीजों पे ध्यान दोगे ना, तो definitely you will have a better chance. But 686 देख के सीधा सीधा रिजेक्ट नहीं करेंगे. एंड इफ दे गिव यू एन इंटरव्यू कॉल, दे हैव कॉल्ड यू फॉर सम रीजन, राइट? ऐसा नहीं है कि टाइम पास के लिए बुला लिया, थोड़ा अम्यूजमेंट हो जाएगा करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. They value their time a lot. They end up taking 40-50 interviews in a day. It's a lot of effort on the panelists part as well. And मैं minimum बोल रहा हूँ मैं 40-50. तो उतना एफर्ट डाल के they will not call you for time pass. So make sure that you honor their decision of calling you for an interview round, and you prepare hard for your interview. और कुछ नहीं, उसमें कोई rocket science नहीं है. So believe in yourself, in your profile, and जो भी है, you have been dealt the cards, उसके साथ ही खेलना है. तो make sure that you do your best in terms of the cat and don't give them another reason to reject you, right? So that is basically what I would say in this context. But possible है definitely. 74, 67.8, 70 percentile. One more year of gap, no work ex, OBC, non-engineer, male. What to justify? How to justify gap? A lot of ways in which you can do it. Some are ethical, some are not so ethical. So again, completely up to you. But just that कुछ तो किया होना चाहिए. That is the first thing. I have mentioned in a lot of my videos in terms of what should you do to justify the gap. So one is of course get full-time work experience, either formal or informal. Formal मतलब join an organization. Informal मतलब go for your family business. अगर कुछ है तो अपना खुद का है, या फिर some relative of yours has a family business. Do it is what I would suggest. If your friend needs some help in starting something, go ahead and do that. अगर full time work experience नहीं होता तो at least go for a part time work experience. कुछ gigs करो, कुछ projects करो, freelancing करो. At least that will simulate the work experience that you have had. तो paper पे शायद नहीं आएगा work ex in terms of months, but you will definitely have something, some stories to talk about. उसके बाद अगर कुछ नहीं है तो डू सम कोर्सेस, पता करो कि कौन सा स्पेशलाइजेशन करना है, एंड देन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इनसाइड आउट. अगर मेरे को मार्केटिंग करना है, लेट्स से, डू अ फ्यू कोर्सेज ऑन मार्केटिंग, ट्राई टू डू सम इंटर्नशिप्स ऑन मार्केटिंग, केस स्टडीज करो, अपना ब्लॉग लिखो, यूट्यूब चैनल बनाओ. देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू, राइट? एंड डू दोस थिंग्स प्रॉपर्ली. अगर वो भी नहीं करना है तो फिर लास्ट इज योर हॉबीज. इफ यू लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट, if you like doing something outside of work and specialization, तो उसको एक थोड़ा फॉर्मल लेवल पे या स्लाइटली हायर लेवल पे ट्राई टू डू दोस थिंग्स, एंड दोस विल कम ऑन योर सीवी. बट इट शुड नेवर बी द केस दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द कैट और फिर मेरा आंसर खत्म हो गया. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. डू समथिंग इन एडिशन टू योर कैट प्रेप. यू विल डेफिनेटली हैव द बैंडविड्थ. The only thing I will want to tell you here is
In case you are going for some way of justifying the gap wherein you have not really done the work, then it is very easy for them to catch you. ठीक है, आगे जाके whenever we are making some videos on interviews, I will try to talk about these things in depth. But if you are saying I had joined my family business and I was handling family business, तो पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस का स्केल कितना है, उसका ब्रेक इवन पॉइंट कितने पे होता है, उसको आगे जाके अगर मेरे को एक्सपांड करना है तो कैसे एक्सपांड करूंगा, sources of finance क्या है, how many people are working in the organization, who all are the stakeholders, गवर्नमेंट के किस पॉलिसीज से या बजट के कौन से वाले जो फैक्टर से योर बिजनेस कुड बी इम्पैक्टेड. सो ऑल दोस थिंग्स यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट एंड अ लॉट. राइट, अगर ये सारी चीजों का क्लैरिटी है ना, देन द पैनलिस्ट विल नो दैट यू आर जेन्युइनली वर्क ऑन योर इन योर ऑर्गेनाइजेशन. अगर ये सब चीजों की क्लैरिटी नहीं है, देन डेफिनेटली दे विल नो कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है, एंड देन दे विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन योर एंटायर कैंडिडेट. राइट, तो मेंटली वो हो जाता है ना. वंस समवन लाइज टू यू, यू विल स्टॉप बिलीविंग एवरीथिंग दैट दिस पीपल से. तो वो मतलब बी वेरी केयरफुल ऑन दैट फ्रंट. इफ यू आर सेइंग समथिंग, make sure that you have researched it thoroughly. That is my only thing. But otherwise, try to do something in addition to cat prep. जो चार level बताए, do something or the other from that, and I think we should be fine. At least you will have a fighting chance of converting the interview. ठीक है? How to improve accuracy in VRC? Lokesh, I've just answered this. One, तो मतलब of course, you answer only when you are absolutely certain of the answer. मेरे को लग रहा है B आंसर है. B और C के अंदर ना, B में वही वर्ड्स यूज किए जो पैसेज में यूज किए, इज नॉट रियली दी राइट वे टू से दैट बी इज मैथ्स. बी के अंदर यू शुड से दैट बी टॉक्स अबाउट इट इन अ मच लेस कन्विंसिंग मैनर कंपेयर टू व्हाट इज बीइंग डन इन ए. दैट्स व्हाई ए इज आंसर, बी मेरा आंसर नहीं है. सो और वो कन्विंसिंग लेस कन्विंसिंग क्यों है? क्योंकि इसके अंदर मस्ट करके यूज किया हुआ है, इसके अंदर कुड करके यूज किया हुआ है. सो दोस कुड बी दी वेज इन विच यू थिंक अबाउट आंसर्स. राइट, तो वहां पे whenever it comes across, whenever it comes to पिकिंग वन ऑप्शन आउट ऑफ द लास्ट टू, क्योंकि दो तो एब्सोल्यूट नॉनसेंस होंगे इन मोस्ट केसेस, दो ही ऑप्शंस होंगे जिसके बीच में फाइट होगा. राइट, एंड दैट इज बेसिकली वेयर यू लर्न हाउ टू पिक एंड चूज विच आंसर विल बी दी विच ऑप्शन विल बी द बेटर वन. ठीक है, तो वो मतलब ऑफ कोर्स इट विल कम थ्रू अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. तो मेक श्योर दैट यू आर डिसिप्लिन इनफ टू आंसर ओनली दोज क्वेश्चंस दैट यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन अबाउट, नहीं तो फिर मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करूं. राइट, दैट इज वन थिंग. द सेकंड थिंग इज अगेन, I really want people to understand what their brain goes through when they are taking a test. ठीक है, तो मैं अगर बाद में पूछूं कि अरे ये बी आंसर मार्क किया लेकिन आंसर तो सी था करके, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट व्हेन यू मार्क्ड बी एज द आंसर? अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियली हैव एन आंसर टू दैट क्वेश्चन. दे आर लाइक कि नहीं मुझे लगा कि उस टाइम पे कि बी आंसर होगा करके, एंड दैट गिव्स मी नथिंग. तो मैं कैसे एनालाइज करूंगा कि बी मेरा आंसर मैंने क्यों उस टाइम पे वो किया था? सो इफ यू सफर फ्रॉम द सेम इशू कि मैंने पूरा वर्बल किया, फिर डीआई किया, फिर क्वांट किया, एंड देन आई फॉरगॉट अबाउट व्हाट आई वाज थिंकिंग व्हेन आई मार्क्ड द पर्टिकुलर आंसर इन बीएआरसी, तो मेरे लिए इशू है. मतलब मैं रेक्टिफाई क्या करूंगा? मेरे पास अगर सिम्टम ही नहीं है तो मैं क्या मेडिसिन दूं? राइट, दैट इज जनरली गोइंग टू बी एन इशू. एंड दैट्स व्हाई व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट इज, अगर बार बार आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं हो रहा ना, रिकॉर्ड योरसेल्फ. एक वॉइस नोट अपना रिकॉर्ड कर लो फॉर एवरी क्वेश्चन. कीप द वॉइस रिकॉर्डर ऑन एंड टॉक टू योरसेल्फ ड्यूरिंग द टेस्ट. ठीक है, इनिशियली कुछ टेस्ट के लिए टॉक टू योरसेल्फ, बोलो कि अरे ये वाले क्वेश्चन में ना ये आंसर ऑप्शन ऐसा है ना, तो ये मैंने इसके लिए ये मार्क नहीं किया करके. इट्स ओके, थोड़ा एनएसएफडब्ल्यू हुआ तो भी चलेगा. मतलब इट्स ओके टू व्हाटएवर यूज सम स्लैंग और यूज सम प्रोफेनिटी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव टू लिसन टू इट योरसेल्फ. राइट, यू आर नॉट रिलीजिंग इट टू द वर्ल्ड. बट ये करते रहना, देन यू विल रियलाइज कि अरे मैं जो बोल रहा था और जो सॉल्यूशन में बताया गया नहीं, उसके बीच में कोई मैच ही नहीं है. मतलब आई वाज लुकिंग एट अ कंप्लीटली डिफरेंट पार्ट ऑफ द आंसर, जबकि मेरे को आंसर में ये चीज देखना. एंड वो रियलाइजेशन जैसे जैसे बिल्ड होता जाएगा, वैसे वैसे योर एक्यूरेसी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. बट फॉर दैट टू हैपन, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर रॉन्ग. क्वांट के अंदर इट्स वेरी इजी. यू हैव मार्क 15, कहीं पे 2x प्लस 5 की जगह पे यू डिड 2x माइनस 5 एंड योर आंसर चेंज्ड. वो बहुत ऑब्वियस चीज है जहां पे मेरा आंसर गलत हुआ. वर्बल के अंदर देयर इज नो ऑब्वियस पॉइंट जहां पे मेरा आंसर गलत होता है. राइट, इट इज जस्टिफाइबल टू मार्क बी एज वेल, सी को भी जस्टिफाई कर सकते हो, करेक्ट. बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू चूज बी ओवर सी. राइट, वो जस्टिफिकेशन मेमोरी में डालना बहुत डिफिकल्ट होता है. टू रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट व्हेन यू मार्क द पर्टिकुलर आंसर, इट्स वेरी डिफिकल्ट. राइट, अ लॉट ऑफ टाइम्स इट सो हैपेंस दैट इवन आई विल से अरे सब छोड़ दो, एनीवे मतलब देयर आर ओनली टू क्वेश्चंस लेफ्ट, लेट मी मार्क द आंसर व्हिच आई थिंक इज द क्लोजेस्ट, और मैं कुछ तो तुक्का मार दूंगा. ये भी होता है कभी कभी. सो इवन इफ दैट इज द केस, यू से इट लाउड एंड देन यू मार्क द आंसर, सो दैट यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट. करे मैंने ये आंसर मार्क किया था, तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था. And that is basically how you improve your thought process. Verbal is entirely about thought process. It is not nothing about having a technique, right? ऐसा नहीं है कि ये दो वर्ड होंगे तो पक्का आंसर राइट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. क्वांट एंड डीएलआर जैसे, वर्बल इज नॉट अबाउट टेक्निक, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग
and trying to interpret things in your own language and then coming up with the answer. ठीक है, तो वो थॉट प्रोसेस जब तक समझ में नहीं आएगा गलत कहाँ पे हो रहा है, यू विल नेवर बी एबल टू इम्प्रूव. सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग समथिंग ऑन दैट. ठीक है. Okay, 68, 81, 63. I am Udaipur or any other B school. Arpit, as much as possible, जितना हो सके उतना. तो why stop at a 99 percentile if you can get a 99.2 percentile? Why stop at a 99.2 percentile if you can get a 99.5 percentile? The safest percentile in any context is 100 क्योंकि उसके आगे percentile नहीं है. Right? So that is basically what I'm talking about. But I am Udaipur और a top B school में अगर जाना है ना, you will need at least a 95, 96 percentile. तो उतना तो पकड़ के ही चल लो. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन आईएम्स एज वेल. आई एम आल्सो टॉकिंग अबाउट थर्ड जनरेशन आईएम्स. ठीक है, तो वो सारे कॉलेजेस के लिए एटलीस्ट 95 96 परसेंटाइल इज अ मस्ट. उसके ऊपर अगर निकाल सकते हो ब्रिलियंट. अगर एकदम बॉर्डर लाइन सोचना है तो फिर 95 96 आई थिंक इज स्टिल फाइन. कुछ तो फाइटिंग चांस मिलेगा एट अ डिसेंट कॉलेज इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ऑल्सो एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल, सिर्फ कैट के अंदर सब अपना डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द कैट बास्केट. Make sure that you're also looking at other tests, especially SNAP and MAT. Because if you're targeting a 95, 96 at the CAT, there is a very good chance that with a similar intellect and similar preparation, you can crack that 98, 99 percentile at the SNAP. And NMAT के अंदर भी वो 230 to 40 का स्कोर बन जाएगा जो कट ऑफ जनरली होता है. ठीक है, सो दोस आई थिंक शुड बी पॉसिबल एट योर लेवल. सो मेक श्योर दैट वो वाली चीजें आर ऑल्सो इन प्लेस. ठीक है. Fresher with no work ex, chalega. It's fine, Arpit. It's not a problem at all. Again, as I mentioned earlier, if you have recently passed out, what you can do is you can try to work on something, either full-time work experience or a startup or family business. First layer. Second layer is do an internship, freelancing project, कुछ तो एक live project कर लो. Third level is do a course in the specialization that you intend to take up. And fourth level is do something that you are passionate about. मतलब it could be as simple as organizing a festival in your locality. राइट, गेट इनटू योर लोकल ग्रुप ऑफ पीपल जो ऑर्गेनाइज करते हैं फेस्टिवल्स को या ऑर्गेनाइज करते हैं कोई इवेंट्स को, ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, टीचिंग करते हैं, जो भी है वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट दोज थिंग्स यू कैन परस्यू. सो दैट इज द लास्ट लेवल ऑफ डिफेंस. कुछ भी नहीं करोगे, यू ऑलवेज रन द रिस्क ऑफ पीपल ग्रिलिंग यू. तो वो एक रिस्क होगा. तो डू समथिंग इन एडिशन टू वट एवर यूर डूइंग. इफ यू प्ले द गिटार, ट्राई टू प्ले सम गिग्स. हफ्ते में एक दिन दो दिन तो प्ले कर ही सकते हो ना प्रोफेशनली. So try to do that. Say that I focused on this. I learned it in a professional way. मैंने कुछ certification किया. If you are a singer, then maybe you try to get trained and all those things. So all those things you can do as a part of your level of defense. जहाँ पे you are doing something which you genuinely enjoy to do. And मतलब उसको you did it in a much more आई डोंट नो प्रोफेशनल नहीं बोल सकते, इन अ मच मोर सीरियस वे आई वुड से. ठीक है, सो दैट उसके बारे में फिर बात कर सकते. लेट्स से फॉर एग्जांपल यू लाइक क्रिकेट, तो यू स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स ऑन क्रिकेट. आप अपने टेक्स को यूट्यूब पे डालना चालू कर दिए. आपने अपने लिए एक नोटबुक में लिखा. यू स्टार्टेड कलेक्टिंग स्टैटिस्टिक्स. यू क्रिएटेड सम क्विजेस फॉर पीपल. कुछ भी हो सकता है, राइट. बट देयर आर लॉट ऑफ वेज टू डू समथिंग अबाउट द थिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट. सो डू दैट एटलीस्ट. सबसे वर्स्ट केस में वो तो कर लेना एटलीस्ट. उतना बैंडविड्थ तो डेफिनेटली विल, राइट. सो डू दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. How can we show family business as work ex and does it count as legitimate? I completed my grad in 24, now working with family business. So family business को legitimately दिखाना possible है. It's a business at the end of the day, right? Like any other business, your family business is also a business. Like any other organization, you would also be an employee at your family business. तो कुछ नहीं होता, बहुत ही बेसिक चीज है. एक लेटर हेड के ऊपर जैसे योर ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव गिवन यू, वैसे ही एक लेटर हेड जो ऑफिशियल लेटर हेड होगा उसके ऊपर someone who is an authority who is eligible to give you a certificate, उनके नाम स्टैम्प साइन के साथ अगर लिख के देंगे कि शुभम वर्क विद अस एज एन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम अप्रैल 24, हैज बीन वर्किंग विद अस सिंस अप्रैल 24, इतना भी अगर लिख के दे देंगे एज एन एग्जीक्यूटिव करके. एंड जो भी है, मतलब जो फॉर्मल नॉर्मल टेम्पलेट होता है, वी आर ओके विथ दी हिज डिसीजन टू गो फॉर हायर स्टडीज, जो भी, मतलब वट एवर यू फील लाइक राइटिंग. या फिर सिर्फ इतना लिख के छोड़ दो भी चलेगा. जनरली 2 लाइन्स का ही होता है, बहुत ज्यादा उसमें ज्ञान नहीं लिखते. दैट इट इज टू सर्टिफाई दैट यू हैव बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द कैपेसिटी ऑफ एक्स सिंस एक्स. उतना करके दे देंगे तो काम निकल जाएगा. दैट इज परफेक्टली ओके. द प्रॉब्लम इज इन टर्म्स ऑफ द इंटरव्यूज. क्योंकि सी एवरीबडी नोज, राइट, नोज. मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलने नहीं बोल रहा कि एवरीबडी डज इट, but everybody thinks that they know that whenever someone goes for a family business, the issue is basically going to be कि भाई मेरे को कैट प्रिपरेशन के लिए टाइम मिलना चाहिए था, करके मैंने एक इजी चीज चूज कर लिया, राइट. एंड इट्स वेरी इजी टू फिगर आउट एज वेल कि किसने फेक वर्क एक्स दिया है.
I will just ask the simple question, right? How many people are working in your organization? And you say there are around 12 people working in the organization. अभी around 12 क्या होता है? Right? It's either 11 or 12 or 13 or 15 or 100. Right? अगर मेरे को 12 एम्प्लॉय भी मैं गिन नहीं पा रहा हूँ आफ्टर 1 year ऑफ वर्क एक्स, तो मतलब समथिंग इज मिसिंग समथिंग, राइट? टर्नओवर कितना है कंपनी का? अब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं 10-15 करोड़ के आसपास हूँ। 10 करोड़ के 15 करोड़ के 12.5 करोड़ के 11 करोड़, व्हाट एग्जैक्टली इज द टर्म? राइट? हाउ मेनी सिटीज आर यू प्रेजेंट इन? 4-5 सिटीज। अरे 4-5 क्या होता है? राइट? तो समथिंग टैंजिबल हैज टू बी देयर, समथिंग कॉन्क्रीट हैज टू बी देयर। अगर ये कॉन्क्रीट आंसर्स नहीं आ रहे हैं ना, देन ऑफ कोर्स यू विल एंड अप इन ट्रबल। ठीक है? सो डोंट तो अगर बोल रहे हो फैमिली बिजनेस, मेक श्योर दैट यू नो समथिंग अबाउट द फैमिली बिजनेस एटलीस्ट। अगर जेन्युइनली काम कर रहे हो, यू आर नथिंग टू फियर। आई हैव सीन पीपल विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी जिन्होंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया है, एंड देयर इंटरव्यूज हैव बीन मच बेटर देन पीपल हु हैव वर्कड इन आईटी कंपनीज, राइट? तो वो दैट इज डेफिनेटली अ गुड एक्सपोजर दैट यू आर गोइंग टू गेट, बट मतलब जेन्युइनली डू समथिंग इज व्हाट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट। ठीक है? could I please add percentile calculator as well in your mock analysis calculator excel sheet? परसेंटाइल कैलकुलेटर, ठीक है? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट। सो आई वाज अ पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूट अर्लियर, एंड वहां पे वी हैड डन अ लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर मॉक परसेंटाइल एंड योर एक्चुअल कैट परसेंटाइल, ठीक है? एंड वी हैड कम अप विद अ फॉर्मूला। तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व थे। सिमिलरली आई एम श्योर दैट अदर इंस्टीट्यूट्स विल आल्सो हैव अ बेंचमार्क। एक बहुत सिंपलिस्टिक बेंचमार्क होता है व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल यूज, इज मे बी यू विल कवर व्हाटएवर गैप यू हैव फ्रॉम 100 परसेंटाइल। So let's say you are at a 70th percentile. So typically कितना expect करना चाहिए? I would be expecting an 85 to 90 percentile at the CAT. अगर मेरे को 70 percentile consistently आ रहा है at my mock tests. But I'll see if I can do something, if I can add a percentile calculator or a calculator that helps you figure out which colleges can you apply to. I'll try to do that. But I think it will take time, Archit. But a good suggestion, Archit. 876 Shruti, yes, definitely. So we have discussed similar profiles earlier in the session. So you can have a look at the recording. You can just go back a bit and you can see. But it's a decent profile. I think you should have a good set of colleges that you can choose from. That 6 could be an issue. 7-6 could definitely be an issue. But having said that, there are a lot of colleges. XLRA, for example, right? XLRA बहुत ज़्यादा bullish नहीं होता on your accounts. They will just look at your interview performance. If your interview performance is good, and they have like really good interviews. मतलब, I have had my best interview experiences at XLRI. Worst in case of results, but best in case of experience, right? So the panelists are generally very well informed, knowledgeable, and so on and so forth. तो वहाँ पे if you prepare well, I'm sure you they will consider you nicely, in spite of your 876 record. Same thing goes for something like an IFT. Let's say again depends on the criteria कि इस साल का criteria क्या है, and so on and so forth. But as I mentioned, I already know someone who is in Shillong and who has a slightly lower academic जो भी, profile, so to say, compared to what people normally get. But then again, you have colleges like that. FMS में I had a lot of batchmates who had a 6-6-6 kind of a profile, 7-6-6 kind of a profile, and they are doing fine in life right now. So all those things are manageable. You will definitely get some colleges that are interested in you. You have to convert one college at the end of the day. So that is basically what you have to do. If you are able to convert your best call, you are sorted in life. फिर कुछ आगे उसके उससे better you could not have done anything, right? So that is basically what you need to do. But definitely there is a chance 876 पे don't worry. It's not the time to worry right. ठीक है? Rohan, yes I did in fact. So I thought it's the right time for me to do something on my own. So that's what I did. Uh, Okay. I'm repeating for MBA CET 25. Okay, I'll stop right there. I'll not even look at the rest of your question, but it's a very dangerous decision, honestly speaking. So don't do that. Take other tests as well. I have not read the entire question, but bottom of my heart, I'll tell you that please don't depend only on CET. Take CUET, CMAT, SNAP, and MAT. जो भी speed test है ना, at least वो तो ले लेना, MyCat and so on. But don't be dependent on CET because you never know how it's going to turn out, right? And honestly speaking, I know people at the DT as well, and they're good people. I'm not saying they're bad people, and they do things intentionally to spoil your chances and so on. But there is a lot of fluctuation that happens. So 2015 was possibly the worst CET conducted in the history of CET because it was conducted across 4 slots, I believe, back then. And हर एक slot में there were 15-20 questions that were incorrect, and because of that उनका normalization पूरा ऊपर नीचे हो गया, and so on and so forth. 16 से लेके 20 तक they outsourced it to IBPS, and it was conducted extremely professionally, beautifully conducted. I think those were the most fair tests in the history of CET, and I've been taking CET since 2010. ठीक है, तब से मैं CET दे रहा हूँ. But
यहाँ पे अगर देखते हैं तो फिर 16 से लेके 20 तक सीईटी वाज कंडक्टेड इन अ मच मोर प्रोफेशनल मैनर। 20 के बाद, कोविड के बाद 21 और या आई थिंक 21, 22, 23, 24, 4 years I think it has happened that CET has been conducted by DT themselves, so to say, and because of that वो फिर से वो वाला consistency नहीं आया। In fact, this year they released the papers and they tried to be transparent about all of these things. But फिर उसमें भी एक problem हो गया कि there were some 8, 9, 10 questions in every slot that were contested by people. And because of that now वो थोड़ा experience spoil हो जाता है। And to be very honest, I have not mentioned this on any public forum, but I was expecting a score of around 185 out of 200 this year at the CET, and I got a 99.96-ish percentile this year. And what I have been a 7 times CET 99.99 percentile. So it's very difficult for me to believe that there would be the 10, 12 people who will be above 185, 190 in that kind of a test, right? But ठीक है मतलब whatever happens happens. So that's why I would suggest कि सिर्फ CET पे मत dependent है ना, one. Second, abhi, let me read the rest of your question. ACADS are low 8, 8, sorry, 80, 70, and 8. Laksh, those are not low, right? You just look at the charts above yours, and definitely you will see that you are not in the minority for sure. Of course, they are not exceptional, but they are something that you can definitely fight with. One. And is it worth to prepare for CAT? Definitely yes. Definitely yes. Because CAT, see, at the CET, if you're looking at it, you have JBIMS. And after JBIMS, you have SIDNAM. And after SIDNAM, you will directly go to Wellinger and so on. So there is a lot of gap between 1, 2, 3, 4, 5 and so on. वैसे है। अगर इक्विवेलेंट देखा जाए सेटअप कैट के अंदर, a Sidnem you can compare or you can say that a lot of colleges are better than Sidnem as well, including say an XIMB for sure, and IMT Ghaziabad. In most rankings they will put IMT Ghaziabad above Sidnem. If you look at an IMI Delhi, most rankings will put them above Sidnem. I don't know, something like an IIT Roorkee for example, a Bitsom kind of a college. So all these colleges might actually be above Sidnem, right? Especially when it comes to rankings. GIM might be थोड़ा iffy. TAPME you can say might be slightly better than Sidnem. तो ये सारे कॉलेजेस ओपन हो जाते हैं, एंड ये सारे कॉलेजेस कितने परसेंटाइल पे आते हैं? इवन इफ आई गेटिंग 85 to 90 परसेंटाइल, यू स्टैंड द चांस ऑफ गेटिंग इनटू मेनी ऑफ द कॉलेजेस दैट आई मेंशन्ड, राइट? ठीक है, तो सिर्फ वो कॉन्टेक्स्ट में आई वुड से दैट इट मेक सेंस फॉर यू टू टेक द कैट, अगर सीईटी देने की कोशिश कर रहे हो तो। एंड इफ यू आर एस्पायरिंग ओनली फॉर जेबीआईएमएस, again it will help you if you take the cat, because if you are good enough to score a 99.9 plus percentile at the CET, I can absolutely be certain that you are good enough to score a 95 96 percentile at least at the cat. I know दोनों का डीएनए अलग है, बट स्टिल 95 96 परसेंटाइल तो निकल जाना चाहिए एट दी कैट इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ 99.9 एट दी सी। ठीक है, एंड वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगेन योर एमडीआईज ओपन अप, योर आईएफटीज माइट ओपन अप, योर सेकंड जनरेशन आईएम्स माइट ओपन अप, तो ये सारी चीजें ओपन अप हो जाएगी, एंड देन अगेन यू आर डूइंग अ बेटर जॉब। सो कैट मेक्स एब्सोल्यूट सेंस ऑन बोथ फ्रंट्स। इफ यू आर स्कोरिंग वेल एट द सीईटी, डेफिनेटली कर लो। अगर सीईटी के अंदर ऑप्शंस ऊपर के 3 4 कॉलेजेस हैं, डेफिनेटली कर लो, क्योंकि 85 90 परसेंटाइल शुड बी समथिंग दैट इज डेफिनेटली अचीवेबल फॉर इट। ठीक है, सो दैट इज माय सजेशन। How can I start? What's the roadmap? So, Laksh, again, I had done a video on 6 months to CAT. I'll try to put it in the description box below. You can check it out on the channel itself. In fact, if you go, I think it will be one of the first few videos that you will see on the channel, on the homepage of the channel. So, wo kar lena. And in the next week, I'll be coming up with a video on 5 months to CAT ka strategy, 150 days to CAT. So, maybe if you can wait for 2 or 3 days, by Tuesday or Wednesday, I think that video should be up. So, that will help you plan ahead for the next 5 months. Uh, Tips for LRDI. Okay, so Shruti, there is a surprise for you. I think Monday, right? Yeah, Monday. Monday ko there is tomorrow. There is going to be a video release which will be about set selection in LRDI. So we had done question selection in quant on Saturday. Yesterday we had released that video, and on Monday I'll be releasing the second edition of that video. So we'll be releasing how to select sets properly in LRDI. So that is going to release tomorrow. Tuesday, I think Verbal will be releasing. So वैसे करके we are releasing these videos to improve your question selection. The first thing, ठीक है, तो वहां पे वो हो जाएगा. Second thing, you appear for these daily drill exercises that we do. वहां पे we discuss sets at a very granular level. बहुत ही basic level से I generally start solving these sets. तो वैसे कर करके ही you will improve. The third thing is you have to be very comfortable with puzzles, right? If you are not comfortable with puzzles, तो DILR के अंदर you will always be scared of the set. And you should never be scared of the set. You should be looking forward to solving the set. क्योंकि one thing is for sure, मतलब एक चीज 100% है, मतलब ट्रू है, मुझसे सच है। क्या सच है इसके अंदर? देयर इज वन एब्सोल्यूट ट्रूथ, एंड दैट इज
every set is going to have one correct answer, or every question is going to have one correct answer. There is going to be one solution that will be true after using all the data points. It's like solving a Sudoku. When you are solving a Sudoku, you know that there is only one answer to this puzzle. अगर multiple answers possible होते ना, वो puzzle बनता ही नहीं, right? And that is what you have to believe in, कि ये तो fact finding mission जैसा हो गया. इसमें ना बहुत सारे possibilities exist करते हैं, but only one possibility is true. So you have to be Doctor Strange in that context, and you have to figure out what is that one possibility that you will be able to get, and कितना जल्दी उसको लेके आ सकते हो. And for that, to develop that kind of an attitude towards puzzle solving, you should solve a lot of puzzle types जहाँ पे you know that there is only going to be one answer, right? तो ब्रेन टीजर जो होते हैं ना, जिसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, लैटरल थिंकिंग करना होता है, वो सारी चीजें नहीं करनी है. Try to do your kakuros, try to do your hitoris, try to do your sudokus. I have put some videos on the channel as well, in terms of destination DLR करके there's a playlist जिसमें I try to explain a puzzle to you once every 2 weeks or something. तो वैसे करके we have put some puzzle types वहाँ पे. Try to explore those puzzle types. Free time मिलेगा तभी. Don't do only puzzles, right? तो वैसे करके you can improve your basic wiring one. And second thing, दूसरा वाला पार्ट जो है ना, वो प्रैक्टिस से ही आएगा. एंड सिलेक्शन वाला पार्ट जो है, दैट टुमारोज वीडियो आई थिंक विल कवर इट एक्सटेंसिवली. So it's a pretty long video जिसमें I have covered what all parameters should you look at when you are selecting DILR sets during the actual test, and क्या क्या चीजें help कर सकती है. So maybe have a look at that, and if there is still any doubt, you can put it as a comment to that particular video, and I'll be more than happy to address that. ठीक है. 82, 69, 61 preferred score for cat. Again, Gada, the same answer for you as well. At least a 96 percentile. उसके नीचे तो मतलब I will be very skeptical. Although I know that जो लेटेस्ट एम्स होते हैं वो 92, 90 परसेंटाइल पे भी बुला लेते हैं कभी कभी. बट टू बी एब्सोल्युटली सर्टन ऑफ गेटिंग समथिंग सब्सटेंशियल, आई वुड बी टारगेटिंग अ 95, 96 परसेंटाइल एट द वेरी लीस्ट. ठीक है. Can I do CFA along with the CAT instead of a job, or should I do a job? See, CFA preparation is fine. Just that you should be very thorough with your CFA L1 का syllabus. I am assuming it's L1. तो L1 का जो भी तुम्हारा content है उसको लेके you should be absolutely certain कि क्या चल रहा है करके. So that is fine. मतलब you are doing something in addition to CAT preparation. चलेगा. But then again, it is not. It is preparing for another test when I'm preparing for the CAT, right? So it's as simple as that. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर अ फ्रेशर, क्योंकि फाइनल ईयर में भी हम वही करते हैं, राइट? फाइनल ईयर में वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कैट एंड फॉर आवर कॉलेज टेस्ट. अब वो कॉलेज टेस्ट रिप्लेस होकर सीएफए हो गया. दैट्स द ओनली डिफरेंस. सो इफ यू हैव नो अदर ऑप्शन, इट इज फाइन टू परस्यू सीएफए एंड प्रिपेयर फॉर द कैट, बट देन बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल द बेसिक्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी एट द सीएफए. तो वो मतलब एब्सोल्युटली परफेक्टली हो जाना चाहिए. ठीक है. If I get top 10, I am Bangalore directly with your academics calls for interview. Is that true? Yeah, Kaja, even they do that. So they will put it in their selection criteria, shortlisting criteria, that top 10 people across the disciplines that they have mapped people into will be directly called for that interview, subject to them clearing the cutoffs. So वो होता है generally. And they do that. Even 100 percentilers, I believe, they call for interviews directly. So that is a tradition that exists. But then again, इनमें से कितने लोगों का convert होता है ना, मतलब academically still yes, but CAT 100 percentilers में I have not heard a lot of people converting I am Bangalore purely on the basis of the CAT 100 percentile with average ACATs. So I am Bangalore will always err on the side of giving admissions to people who have good ACATs compared to people who have a good CAT percentile. तो वहाँ पे good ACATs will play a part. If you get a call, you have to fight for it. That is the truth of life. But I am Bangalore के अंदर I will not be very certain कि मेरा convert हो जाएगा. I will prepare, of course. I have to prepare with all my might, use every ounce of chance, luck that I can get or I can create. But मतलब I will not be very hopeful. But हाँ, मतलब if you can get 100% brilliant, nothing like it. मतलब you will have much better things to do in life. ठीक है. Uh, Shruti is asking, how can having a YouTube channel help in profile manner? So basic stuff है. YouTube channel जो है ना, you have to create some evidence for whatever you're doing. If I just say that I sat and thought about 5 advertisements, so people will find it difficult to believe. But if you show them a YouTube channel, you can carry your phone in the interview room. You can carry a portfolio in the interview room. People share their paintings, people share their poems, people share their blogs के printouts. ये सारी चीजें वो panelists को देते हैं पढ़ने के लिए. And the panelists go through them in most cases. People sing during interviews, right? People might play an instrument as well during interviews. तो ये सारी चीजें होती है. People carry Rubik's cube. ये सब चीजें हो चुकी हैं interviews के अंदर.
right? Similarly, if you have a YouTube channel, you say that, I have started a something which is a passion project, and I have a subscriber base of 2,500, 3,000, 5,000 people, and the people are really liking the content. And this is one thing that I realized about myself. I got over my fear of public speaking. I got over of my fear of failure. ये सारी चीजें if you can convey ना, तो then that will be great. That will be a nice point in the interview, because not a lot of people will be doing that. So one, it is documented evidence of what you are passionate about. It shows your quality. It shows your dedication to your craft. One, and second thing, of course, you will have stories to talk about during the interview. And वो थोड़ा सा वो एक आ जाता है ना interview के अंदर, one perception that gets built about you ना, that stays with you. So they will not remember you as Shruti. So they will not say अरे वो श्रुति को select करना चाहिए करके. They might say अरे that girl who had come ना, who was a painter, I think she is a good candidate. तो वैसे तो that painting gets associated with you. So you have to create as many different points about yourself that will help them recall you well. Agar if you are one of those people who has done engineering, who has done IT job, and who has worked on similar projects, so then it becomes difficult to differentiate. So a differentiating factor मिल जाता है because of all these kind of things. That's why I would recommend. ठीक है. Prathamesh, it's a long discussion, but maybe I'll cover it on some forum, but it's nothing serious, right? Nothing about it. At some point in time, both of us believe that we had created whatever value we had for each other, and yeah, you have to move on in life, right? So that was basically the thing. No, nothing bad, no bad blood as such. So that was basically it. Um, Khushi is asking, apart from mock and sectionals, which materials to use for daily practice of DRR, VRC? My coaching modules and PYQ. So see, Khushi, generally coaching modules are going to be good enough, right? Generally you will get a stash of 4,000, 5,000 questions in your coaching module. उनका और online वाला अगर मिलता है, PYQ से अगर मिलता है, that is generally going to be good enough. If you have solved everything, then mocks and sectionals is the only thing that you can go for in most cases. अगर एक इंस्टीट्यूट का मॉक पूरा खत्म हो गया तो फिर दो इंस्टीट्यूट से मॉक कर ले, right? But my point is, you should remember everything that you have done. I get a lot of queries now. People say that they have solved the entire book of Arun Sharma or Nishit Sinha or whoever and Sarvesh Verma, जो भी है मतलब whichever publication is available, you have solved the entire book. But उसके बाद भी मेरा concept ठीक नहीं हो रहा है. So solving a book does not mean that I look at a question and after 1 minute I give up and then I look at the solution and then I'm like अरे ये तो solve हो गया. Now I'll do something else. Right? वैसे करके questions मतलब you will always exhaust another set of material as well. So that is not the point. You should be able to more or less recollect. I'm not saying entire answer recollect करना है, but at least concept क्या test हुआ था, interesting questions कैसे किए थे, what exactly was the thing that broke this particular set or this particular question, RCs में क्या अलग perspective था. If you are able to get everything that I have said and for every question you have done, I'm sure you are a मतलब very good candidate at that point in time. ठीक है. Then it makes more sense for you to take as many mocks as possible. तो अगर ऑलरेडी एम कैट्स दे रहे हो तो सिम कैट्स भी देना चालू कर दो. अगर सिम कैट्स भी दे रहे हो तो फिर सीएल मॉक्स भी देना चालू कर दो. वैसे करके you will have a lot of mock tests that will be there, and you have to target all those mocks as well equally. So when I was preparing for the CAT, I didn't go through a lot of institute material as such. ठीक है. I always used to solve questions on Pagal Guy, the forum that was there. तो वहाँ पे जो भी doubts आएंगे, I used to sit and solve them one. And second thing, I used to appear for a lot of mock tests that existed. So I must have taken more than 80 mocks in my entire year of CAT preparation. ठीक है. तो वो मतलब that is what I kept on doing. So every 2 days, 2 or 3 days, I'll take a mock. वैसे करके I prepared over the 7-8 months that I prepared for the CAT. And that is something that you can do. और उसके बाद भी अगर bandwidth बचता है तो फिर then use it to develop your profile. फिर मतलब और mocks पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी फायदा नहीं है, right? So at a point in time, if you have absolute clarity on whatever you have done, you have been taking all the mocks as well. You have been scoring really well at the mocks as well. तो फिर मतलब CAT preparation में और ज़्यादा बचा नहीं है कुछ करने के लिए, right? Now you have to do something else. तो उसमें you build a profile as well. तो वो कर लो. So you will never run out of work. That is one thing. It might not be related to CAT, but you will never be short of work. तो वो हमेशा you will have more to. ठीक है. Um, Adequate number of DILR sets and quant question. So Nilesh, I had mentioned in one of my earlier videos that 10,000 questions is what I think is good enough to prepare to crack the CAT rather. उसमें से 5,000 questions should ideally be quant and 2,500 questions each from VARC and DILR. तो अगर मैं 2,500 भी बोल के चलता हूँ तो you should ideally be solving somewhere around 500 to 600 sets. That is the benchmark in general, in total. अभी से अगर मैं कैट तक की बात करूं, I would be very happy if you are able to solve somewhere around 200 to 250 sets. तो अभी से लेके कैट तक if you are able to manage 200 to 50 sets, मतलब 1 to 2 sets every day on an average, तो I think you should be good to. So
मतलब एज अ नंबर, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि यू सॉल्व 10 सेट्स एंड यू गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी, वो भी हो सकता है। यू सॉल्व 5000 सेट्स एंड यू स्टिल डोंट गेट क्लैरिटी, वो भी हो सकता है। बट एज अ बेंचमार्क आई वुड नॉट गो बियॉन्ड 2 सेट्स। तो अगर 150 डेज टू कैट है, तो नॉट मोर देन 300 सेट्स इज व्हाट आई वुड सब्जेक्ट माई ब्रेन टू, क्योंकि एक पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा चीज याद रखना भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सॉल्व 300 क्वालिटी सेट्स, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू मैनेज देम। हर एक मॉक के अंदर 4 सेट्स आएंगे, अज्यूमिंग यू विल टेक 20 और मॉक्स, 80 सेट्स वहीं से हो जाते हैं। डेली ड्रिल्स के अंदर इफ यू लुक एट इट, विल बी हैविंग रफली 10 11 10 टू 20 डीएलआर सेशंस, 20 पकड़ लो। 20 इंटू 240 सेट्स वहां से हो जाएंगे। वर्कशॉप्स वाले में आई बी कवरिंग अनदर 100 सेट्स काइंड ऑफ थिंग, तो वो सब करके वो हो जाता है। तो 300 सेट्स इज रियलिस्टिक स्टार्टिंग नाउ ऑनवर्ड्स। क्वांट के अंदर एज आई मेंशन 5000 क्वेश्चंस एट द बिगिनिंग ऑफ द season. If you have 8 9 months to prepare, so then 5000 makes sense. Considering that you have 150 days to CAT, I would be comfortable with around 3000-ish questions, 2500 3000 questions. But it is never a game of numbers. It's never a game of how many questions have you solved. It's about how much you have understood and how beautifully your brain works. वही, और कुछ भी नहीं उसके अंदर। तो don't focus on the number of questions. And confidently about 98 percentile, honestly I can't sit here and tell you that मेरे को 98 percentile मिलने वाला है this year. Mostly we should get, but there are always asterisks that are involved. So 98 percentile के लिए वही, that 10,000 benchmark is for 99 percentile. So same benchmark पकड़ के you can go for the 98 percentile bit as well. ठीक है। DI is not enough, LR should be enough. Rishabh, do have a look at the set selection video that I'm going to put up today. मतलब there is an absolute surprise for you. In fact, DILR syllabus के अंदर भी I had covered this. If you look at that previous video, जहाँ पे मतलब the easiest sets in the last few years have been DI sets. जो weird looking graphs होते हैं ना, those have been the ones that have been the easiest sets. तो ऐसे बिल्कुल मत सोच के जाना कि DI easy है तो LR difficult होगा, LR easy है तो DI difficult होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। You can get an easy set from DI as well. And if you go with the mindset कि मेरे को सिर्फ LR करना है और DI पूरा disregard करना है, you might end up in trouble most of the time. So don't do that. जो easy set है वो करना है, वो LR है कि DI है मेरे को फर्क नहीं पड़ता, right? That is basically my ये। So please don't do that. I would not suggest you to do this at all. सिर्फ DI करके मत आ जाना, ठीक है। 12th marks do matter a lot. 63% in 12th, 8 in both 10th and grad. XLRI, HRM will be a good target. Absolutely, Shitij. It should be a good target. And ठीक है, marks is what I have got right now. Now there is no point thinking about marks. अभी मैंने क्या सोचा है, मेरे को एमबीए करना है। मेरे को एमबीए क्यों करना है? मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजीशन चाहिए करके, इसके लिए मेरे को एमबीए करना है ना। अब मेरे को 10th मार्क्स क्या मिले थे? मेरे को 10th में ज्यादा मार्क्स मिले थे तो मैं एमबीए करता क्या? नॉट नेसेसरी, राइट? सो योर ड्रीम इज टू गो फॉर एन एमबीए। whichever B school recognizes your worth and whichever B school you think deserves you, वहां पे अपने को एमबीए करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो दे शुड नो व्हाट यू आर वर्थ एंड यू शुड ट्रस्ट देम। तो दोनों जगह पे जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, यू विल गो अहेड एंड डू योर एमबीए, एज सिंपल एज दैट। अब वो एक्सएलआर एचआरएम भी हो सकता है, वो टिस भी हो सकता है, वो एमडीआई एचआर भी हो सकता है, वो आईएम रांची भी हो सकता है, आईएम त्रिची भी हो सकता है, रोहतक भी हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, एससीएम एचआरडी भी हो सकता है, राइट? एंड पीपल हैव पास्ड आउट फ्रॉम ऑल दिस कॉलेजेस एंड हैव डन रियली वेल इन लाइफ, अगर एचआर करना है। So, which college you're getting into is secondary. How good your profile is secondary. The point is you have decided to go for an MBA. You have to take tests to get calls for an MBA from an MBA institute. वो उसी में मेरे को ध्यान देना और उसी को मेरे को क्रॉस करना है। तो if I'm even if I have scored whatever in my 10th 12th graduation, I have to get a 99 percentile, let's say for example, at the test, and उससे अगर मेरा लाइफ ठीक होता है तो I'll put my entire energy doing that. और अगर नहीं मिलता मेरे को 99 परसेंटाइल, आई विल गो फॉर एन इंस्टीट्यूट अगेन जहां पे म्यूचुअली मतलब इट्स बेनिफिशियल टू बोथ ऑफ अस। मेरे को एक और साल एक्स्ट्रा नहीं डालना पड़ रहा है और कॉलेज भी डिसेंट इनफ है, तो व्हाट इज द हार्म इन जॉइनिंग द कॉलेज? ठीक है, बट ऑल दीज डिसीजंस विल हैपन इन द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून, व्हेन यू हैव कन्वर्टेड योर कोर्स। अभी बैठ के मैं कॉलेज को रिजेक्ट नहीं कर सकता, दैट इज द होल पॉइंट ऑफ एड्रेसिंग दीज थिंग्स। ठीक है। um, Starting from July, please suggest a detailed roadmap. Shubham, as I mentioned, it should be up by Wednesday, I believe. Tuesday, Wednesday, Thursday, one of these 3 days. May I think 150 days to CAT should be up. So do have a look at that. वहाँ पे we will discuss the entire journey from now till CAT. Harshit, again, I will be slightly biased in this context because I have worked with them in the past. So definitely there is a lot of research that goes into making these questions, lot of research that goes by before they shoot the solutions. Solutions के बाद भी मतलब there are a lot of things that are there. So definitely I would say that it's worth it. It's definitely one of the top two mock test providers. So surely you can go for it. And I believe video solutions are available for this season as well. So that should not be an issue. Low ACATS, OBC,
non-engineer male, how much percentile to bring IM calls. So see, OBC percentile will be generally 4-5 percentile below the general percentile that I'm suggesting. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 95 96 is for general candidates, OBC का percentile will typically be around 90 92 percentile to be on the safer side actually. थोड़ा नीचे भी मिल जाएगा कॉल मोस्टली, बट एटलीस्ट ट्राई टू हिट दैट 90 91 92 परसेंटाइल. उतना करोगे तो यू विल बी स्लाइटली बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल इन द कैटेगरी. ठीक है. So that is what you can do. I have Ishani saying I have left my job last September and gave CAT but couldn't convert my DSI and D school. So what can I do to improve my profile? Can't take a job now. So Ishan, again the same thing I mentioned, right? If you can't take a job, either family business, startup, first level, second level is go for internships, लाइव प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, कुछ तो मतलब पार्ट टाइम बेसिस पे कर लो, जहाँ पे यू आर सपोज टू इन्वेस्ट मे बी 10 hours 20 hours a week, वैसे टाइप का कुछ काम कर लो. थर्ड लेवल इज परस्यू योर स्पेशलाइजेशन. अगर मेरे को पता है कि मेरे को मार्केटिंग ही करना है, देन गो फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और गो फॉर एडवांस्ड एक्सेल कोर्सेज, और गो फॉर मार्केट रिसर्च, consumer behavior, जो भी courses available है, principles of marketing, all these are courses that are available across Coursera, Udemy, जो भी मतलब जहाँ पे भी आप, depending on your budget and everything, you can sign up for any of these and वहाँ पे फिर courses कर लो. The last level of defense is essentially pursuing your hobby. So let's say for example you like playing cricket, so start playing in your local tournaments. Try to maybe coach people during the weekends. बोल दो कि भाई मैं अपने जो भी बिल्डिंग के बच्चे या मेरी लोकेलिटी के बच्चों के लिए क्रिकेट के कैंप ऑर्गेनाइज करता हूँ, जहाँ पे आई डू दैट. If you like playing cricket, if you like reading about cricket, try to write about cricket. Try to give your opinions on whatever you see. तो कल का अगर मैच होता है तो write something about it. So you can always create a blog. It's very easy to create a free blog. It's very easy to create a free YouTube channel. तो वैसे कुछ तो उसको करके मतलब do something about it, right? So that is what I would suggest in terms of building a profile. Four levels. One, work ex slash family business slash startup experience, full time experience. Second, freelancing slash internships slash live projects. Third level is courses in the specialization you are genuinely interested in. And level 4 is passion projects, hobbies, interests too. ठीक है, तो उसमें से कुछ कर सकते हैं. Vineet, I already replied. Vineet, sorry, I already replied to this. How to improve DIR again through practice. You have to solve a lot of CAT level sets, which mostly will happen through mocks and daily drills, past CAT papers. तो ये सब जगह से you will get a lot of practice sets for DIR one. And second thing, you have to let go of the fear that people generally have in terms of DIR. You have to tell yourself कि भाई ये question का एक ही answer है. There is only one solution to this question, and that is the solution that I will be able to come up with by reading each and every line of this particular set. Not even one line is irrelevant to the set. तो हर एक line relevant है to the set. I have to read everything. I have to represent it on my sheet, and उसके बाद I have to answer the questions. It's a very simple process, but it comes with experience. So one level of experience is solving as many mocks or as many CAT level DILR sets as you can. And second level is being genuinely comfortable with puzzles. So उसके लिए try to learn and solve as many puzzle types as you can, be it in terms of Sudoku, Kakuro, Hitori, and so on. I will try to do one interesting puzzle set this week. So again, something that I have in mind, which is थोड़ा offbeat, but I want to do that. So let's see if I'm able to do that. But ये अगर करते रहेंगे ना बार बार, तो you will improve. ठीक है. ओबीसी 90 to 84 69. आई एम एबीसी के लिए प्रभात, इट माइट बी स्लाइटली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ योर ग्रेजुएशन स्कोर. But again, if general category candidates are called at a 99ish percentile, 99.234 with good ACATS and with 7 8 9 at good with good ACATS, you should ideally target at least a 96 97 kind of a percentile. And with your academic score, Prabhat, I think you can reach that level. So at least target a 96 97. If not, ABC will open the doors to other colleges as well, but थोड़ा high aim करना. Rohan, I have not floated any course as of now. As of now, we are doing daily drills. So I wanted people to experience how I teach and how exactly do we interact. So that is the first level, right? You can't really go and join someone blindly. So the whole idea behind doing daily drills is for you to experience uh, the style of teaching, the kind of comfort that you might have with me. And then in August we will be launching the courses. So fees and everything I'll be sharing maybe on the second half of July or so. तो तब वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, but don't worry. Mohammad Hamza, will we have sessions on YouTube for ZAT exam also, and how difficult are ZAT quants compared to CAT? Uh, See, if you compare ZAT 24 with CAT 23, I think CAT 23 was tougher in terms of quants.
बट मेनी ऑफ द अदर ईयर्स अगर देखते हो तो जैट का क्वांट स्लाइटली ज्यादा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू कैट का क्वांट। प्लस दैट के अंदर यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू सॉल्व द क्वांट सेक्शन। तो 3 घंटे का पेपर अगर है लेट्स से, उसके अंदर यू कैन सॉल्व क्वांट फॉर 1.5 आवर्स ऑल्सो। वो बहुत लोग करते हैं, 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 15 मिनट्स से लेके 1.5 आवर्स तक लोग क्वांट सॉल्व करते हैं जैट के अंदर। सो इट इज समथिंग दैट यू कांट कंपेयर। तो डिफिकल्ट भी अगर है ना, तो पीपल विल बी एबल टू स्कोर स्लाइटली मोर फ्रीली at the ZAT compared to the CAT. That is one. Second thing is in terms of the overall level of difficulty, ZAT is more ambiguous, I would say. तो ZAT के अंदर जो डिसीजन मेकिंग सेक्शन होता है, अगेन the answer could be B on one day and C on the other. तो ऐसा हो सकता है। Now for me, that creates a level playing field, right? Because मतलब let's say for example there is a flat pitch, right? And you have like really good bowlers. I'm giving you a cricket analogy because it is fresh from yesterday. But let's say it's a flat pitch जिसमें you can score whatever runs you want to, and your team has really good bowlers. तो फिर you have an advantage क्योंकि बैटिंग तो शायद कोई भी कर लेगा वो पिच के ऊपर, ठीक है। बट इफ इट इज अ डिफिकल्ट पिच, राइट, तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बॉल गिरने के बाद बॉलर को भी नहीं पता कि कहाँ पे घूमने वाला है, राइट, एंड देन दैट मोर और लेस क्रिएट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर मी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज नोबडी नोज व्हाट्स गोइंग टू हैपन, राइट। सो whoever is able to survive on that pitch, that is basically ZAT। तो ZAT में वही होता है कि डीएम के अंदर nobody knows what the answer is going to be। Now I know that everybody is going to struggle with these kind of questions। उसके अंदर if I try to hit freely ना थोड़ा सा, I know that I will be able to get a higher score with 50% accuracy as well। चलेगा मेरे को 50% accuracy। And that is the strategy that I have been following over the last many years at DZAT। And it has worked wonders क्योंकि my lowest ZAT percentage is 99.92, which happened last year। But that is basically what ZAT looks like। It's a difficult pitch to bat on overall because of the uncertainty that is associated with the test, and which is a good thing, I would say। I would not say it's a bad thing because ये एक अलग टेस्ट है। मतलब every test has a soul of its own ना, ZAT का soul थोड़ा अलग है compared to the other tests, and that's why I also think there is place for ZAT in this entire exam ecosystem, ठीक है। तो that way it is difficult, I would agree to that point। Second thing, will I be doing something on YouTube? Definitely yes। So I'll do some sessions on YouTube, again depending on the demand, depending on whether you people associate with my teaching style or not। I intend to do something for ZAT as well, a course kind of a thing which is focused on ZAT। So that is something that I definitely intend to do later, but वो बहुत आगे की बात है। That will come much later in the cycle, ठीक है। -3 in my mocks, don't know what to do। Okay, Jignesh, I'll just tell you one small story। I know someone who had scored a -3 था, मेरे को लगता है -3 या -6 ऐसे कुछ था, in the DILR section, I believe, in one of the tests। Two people I know, चलो, one person, and both of them got into IIM Ahmedabad, I think the same year, right? And this guy gets a 99.94 percentile, if I remember correctly, and gets into IIM Ahmedabad, not from any IIT or NIT, from a local engineering college in Mumbai, वहां से था, good candidate, ended up getting a 99.94 percentile, got into IIM Ahmedabad। Another girl got a -3 kuch tha, and there was she was very disappointed with the performance, and she was a good sincere student, right, wo tha। But then again what happened is she was a qualified CA, I believe, and she ended up getting a, I think a 97ish kind of a percentile, 96 97 from what I remember, might be more, but 96 97 कुछ था, and ended up getting into IIM as well। तो ये वन ऑफ चीजें ना होती रहती है, -3 वगैरह आते रहता है। द आइडिया इज फॉर यू टू नो दैट ये -3 आया क्यों, right? That is the more important question। why did you get a -3? did you attempt questions properly but last step में कहीं पे कुछ सिली मिस्टेक या करके -3 आया, या फिर you started to hit out of desperation कि भाई कुछ तो मार्क करके आ जाऊं, तो मैंने मार्क किया, and you attempted 6 questions, 3 टीटा थे, 3 MCQ थे, तो 3 मेरे उड़ गए, तो -3 आ गया, ऐसे कुछ हुआ। तो जो you have to figure out why exactly did things happen the way they did, because there is absolutely no reason why you should get a -3, you should get a 0। I can understand a 0, I can't understand a -3, राइट। क्योंकि अगर टीटा क्वेश्चन भी गलत कर लो तो मेरा 0 ही रहेगा, -3 नहीं होगा। सो अनलेस यू आर एब्सोल्युटली सर्टेन ऑफ एन आंसर, यू शुड नॉट मार्क दैट आंसर, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगेन एज आई मेंशन इन टर्म्स ऑफ VARC एज वेल एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, ट्राई टू गेट अ बेसलाइन स्कोर। एक बेस पे मेरा स्कोर आ जाएगा ना, उसके बाद इट्स इजियर फॉर मी टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ दैट। तो मेरा फाउंडेशन ही अगर ऊपर नीचे होगा, तो आई विल नेवर नो व्हाट इट फील्स लाइक टू गेट 15 कंसिस्टेंटली इन। सो मेक श्योर कि 5 ही क्वेश्चन करके आ जाओ, 5-5 मिनट ले लेना क्वेश्चन के लिए, आई एम परफेक्टली ओके विद इट, स्पेशली इफ यू आर नॉट गुड एट क्वांट, चलेगा। टेक 5 minutes on each question, but get 5 correct, 15 मार्क्स लेके आ जाना उसके अंदर, एंड देन यू कैन से कि अरे मेरे को 15 तो मिल ही जाता है फॉर श्योर, नाउ लेट मी ट्राई टू अटेम्प्ट 6-7 क्वेश्चंस एंड मे बी आई विल बी एबल टू गेट 18 21, बट वर्स्ट केस मेरे को 15 मिल जाएगा, एंड दैट इज अ गुड प्लेस टू बी मेंटली, बिकॉज यू नो दैट वर्स्ट केस ये होने वाला है मेरे से।
which is fine. अभी your worst case scenario is -3, which will definitely rattle you a lot. तो वहां से मेरे को पहले थोड़ा improve करना है, फिर और थोड़ा improve करना है वैसे. So it happens to the best of people. Don't worry about it. -3 is fine. If you have been scoring decently well in other mocks, it's okay. -3 is an aberration. उसको छोड़ दो. Don't worry about it. But if you are consistently scoring single digits and -3, then try to get those single digits consistently. ये -3 दिखना नहीं चाहिए कभी भी. ठीक है? और दिखता तो भी there should be some reason to this thing. So unless there is no reason why you should get a -3. ठीक है? Completed my syllabus, yeah, again, but वही ना completing syllabus. अगर मैंने परफेक्टली सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया, मैंने सिर्फ पढ़ा है, बट मेरे को याद कुछ भी नहीं है. इफ आई आस्क यू 10 रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव सॉल्व्ड, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट द आंसर्स टू आंसर, मतलब आई एम नॉट सेइंग द एंटायर सॉल्यूशन रट्टा मारना है, बट द वे इन व्हिच यू सॉल्व देम, और द वे इन व्हिच यू शुड हैव अटेम्प्टेड देम टू सॉल्व देम मोर करेक्टली या मोर क्विकली, अगर वो मेरे को याद नहीं आ रहा, then you have not done it properly. No, you have not done it the way it was supposed to be done. So that is an issue. तो यू माइट हैव टू गो थ्रू द एंटायर थिंग अगेन. पूरा का पूरा बैठ के मत करो, बट जल्दी जल्दी हाइलाइट्स पैकेज तो एटलीस्ट देख लेना ऑफ वॉट एवर यू हैव डन टिल नाउ. एंड इफ यू आर एब्सोल्युटली सर्टन अबाउट ऑल द क्वेश्चंस दैट यू हैव डन टिल नाउ, मे बी यू नीड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव डन. तो शायद वो और मॉक के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ रहा है. सो मे बी दैट कुड बी एन इशू. बट ऑल सेड एंड डन, ट्राई टू गेट दैट बेसिक बेंचमार्क वाला स्कोर लेके आ जाओ. उसके ऊपर यू कैन ऑलवेज बिल्ड. ठीक है, बट वो बेसिक वाला स्कोर आना इज वेरी 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 फाइन. गैप ऑफ 4 years, top IIMs possible. Ankur, everything is possible. Again, one of my juniors at FMS had a 3 year gap, I think, preparing for the civil services. तो वो हुआ था. And that guy got through a very good organization. अच्छा placement भी हुआ, doing very well in life, I'm assuming right now. तो ये सारी चीजें होती हैं colleges में. But to justify that 4 years का gap is very difficult. Again, if you have been preparing for civil services, government exams, जो भी अगर कर रहे हो, सो मतलब वो सर्कल्स के अंदर बहुत सारा रोमांटिसिज्म एसोसिएटेड है विद प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल इयर्स एंड कीपिंग ऑन कीपिंग एट इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. उसको बहुत ज्यादा मतलब ग्लोरीफाई भी किया गया है या रोमांटिसाइज भी किया गया है बाय थ्रू मूवीज लाइक अ 12th फेल काइंड ऑफ अ थिंग और एन एस्पिरेंट्स काइंड ऑफ अ थिंग और व्हाटएवर, राइट. तो थोड़ा वो पॉप कल्चर में इट लुक्स nice, but panelists might not be able to understand, might not be able to associate with that perspective. तो वहां पे you will have to do something to convey to the panelists कि नहीं, मतलब whatever I have learned a lot of things in the past, they have grown me as an individual, ये मेरे में traits better हो गए, and then you can handle the questions. Possible, yes, but probability थोड़ा it will depend on how you prepare for the interviews. So don't be dependent only on the top IIMs for admission, because you have थोड़ा सा profile which might not be mainstream, थोड़ा नीचे है mainstream से. Try to apply to as many institutes as you think is realistically possible, so that you improve your chance of going for an MBA. Again, your job is to do an MBA. Your job is to get to the leadership organization in a company. ऐसा जरूरी नहीं है कि IIM ABC में से जाएंगे तो ही लीडरशिप पोजीशन पे पहुंचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. सो कीप योर ऑप्शंस ओपन, बी रियलिस्टिक इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. एंड ज्वाइनिंग अ जॉब राइट नाउ इज गुड टू गो. या यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अ जॉब राइट नाउ. Your CAT form will expect you to fill in your work ex details till 31st of July और 31st ऑफ अगस्त, आई थिंक वन ऑफ दोस टू डेट्स. तो उस टाइम तक का वर्क एक्सपीरियंस कैलकुलेट करेंगे. बट इंटरव्यू के टाइम पे इट विल बेनिफिट यू. तो ऑल्दो पीपल माइट टेल यू कि अरे अभी ज्वाइन करके क्या फायदा है, कैट के फॉर्म में तो जीरो ही लिखना पड़ेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. बट ड्यूरिंग द इंटरव्यू वट एवर गिव्स यू एन एज, राइट. सो वो छोटा सा अगर 2% भी एज मिल रहा है, आई थिंक यू शुड टेक इट, बिकॉज it will translate into a big thing in the long run. So make sure that you don't take it too lightly. कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, डिसेंट अपॉर्चुनिटी है, ले लो, इज व्हाट आई वुड सजेस्ट. ठीक है. Too bad in algebra, kindly arrange something to solve cat level algebra questions. Yeah, Harshit, I'll try to do something. I'll try to do a topic live maybe one of these days. So logarithms is what I had in mind. So let's see uh, how that goes. And yeah, definitely I would like to do something like this in the future. ठीक है. हाउ टू इम्प्रूव क्वांट, रोहन. अगेन आई मेंशन, एकदम वीडियो का स्टार्टिंग देख लेना रोहन. आई हैव मेंशनड इट इन डिटेल. हाउ शुड यू लुक एट फॉर्मूलाज, हाउ शुड यू लुक एट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. उसका एक रिपोजिटरी बना लो. कीप ऑन लुकिंग एट दैट रिपोजिटरी एवरी 2 or 3 days. एंड ऑफ कोर्स कीप ऑन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट मटेरियल और पब्लिकेशंस दैट एग्जिस्ट. डेली ड्रिल्स अटेंड करो. ट्राई टू गेट योर थॉट प्रोसेस इन प्लेस, एंड वैसे कर करके डेफिनेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व 5 6 7 8 क्वेश्चन बहुत इजीली क्वांट में बन जाएंगे. And in most years that is going to be decent enough, right? So if that is your weakness, अगर एक 85% भी निकाल लेते हो ना क्वांट के अंदर, आई थिंक दैट इज वर्थ गोल्ड डस्ट. तो उसको डिसरिगार्ड मत कर देना.
एंड दोस टू थिंग्स दैट आई मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, प्लीज गो एंड चेक दैट। उसमें मैंने काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया। ठीक है। हर्षित, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट एंड कीप इट। But yeah, that's really nice coming from it. Just an effort from my side as well. So this is again something that I have done in the past, as a different in the form of a different channel. I had done it for the institute that I was a part of as well, and now I'm trying to do it something on my own. So this is not the first time I'm creating a community. I have done it 3 4 times in the past. But I'm really glad that even this generation of cat takers is something are someone who can associate with what I do. Okay, so thank you so much for that. Lokesh 887, Hansraj College couldn't convert Excel. What percentile should I target to convert from FMS or similar colleges? Lokesh, considering a category in a CAT, again, I think somewhere around 85ish percentile, 80ish percentile can also be safe enough. But I would suggest जितना हो सके उतना कर लेना. Your profile does not justify an 85 percentile or an 80 percentile. I am sure you have it in you to cross 90 percentile easily. उतना अगर कर लोगे, you'll definitely get calls, and on the basis of that calls, you can definitely expect some converts. So as high as possible. With your academic background, if you would have not told me your category, I would have said 95 percentile at least is on the cards, 90 to 95 percentile. So I would suggest to focus on that. ठीक है. And with your category, you can afford maybe 4 5 percentile का थोड़ा slide भी afford कर सकते हैं, but don't be hopeful of that. 90 to 95 लेके आने की कोशिश करना. I think you should be right. So 90 to 95 percentile, and you should struggling to understand the application for QA questions. Madhura. So I hope the daily drills are helping, right? Because वहाँ पे we are only doing application of concepts. I am not really teaching concepts as such. Here a formula of triangle, area of triangle is half into base unit नहीं बता रहा. We are directly starting with the assumption that you know your concepts, and then whatever you are doing in daily drills is application of concepts. So if you are able to associate with that, Madhura, on a daily basis, I know you take some time to understand a few questions here and there, बट वो एफर्ट करते रहना पड़ेगा, राइट? सो एवरी डे इफ यू लर्न 5 न्यू क्वेश्चंस, आई थिंक दैट इज अ विन इन इटसेल्फ. तो एवरी डे ट्राई टू टारगेट दैट कि मैंने 5 नए क्वेश्चंस पूरी तरह से समझे, हाउ टू डू दोस, आई अंडरस्टूड ईच एंड एवरी स्टेप व्हाई दिस पर्टिकुलर मेथड वाज अप्लाइड, एंड आई थिंक यू शुड बी फाइन. तो यू हैव टू कीप एट इट. You never know at which point things will turn in your favor, right? You have to keep on doing your job without worrying about the result will see somehow things will fall in your favor, right? You will get an institute, uske baad you'll get a college, you'll get into a college. It might not be the dream college that you started your preparation with, but it will be worth something. Uske baad after 5 years you will realize कि अरे मेरा career जो है ना पूरा मेरे पे depend करता है, right? Nobody asks me which college I am from. In fact, ये introduction में I had to tell सामने से कि I am from FMS करके, and even if I would not have said it, it was fine. तो वो सारी चीजें ना मैटर करना बंद हो जाती हैं आफ्टर मे बी 8 10 years ऑफ योर पोस्ट ग्रेजुएशन. सो कॉलेज का ब्रांड नेम उतने ही टाइम के लिए रेलेवेंट होता है, उसके आगे नहीं होगा. सो डोंट वरी अबाउट इट. ट्राई टू डू योर बेस्ट एट दी कैट. अगर कैट में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट अ बिट लेटर एज वेल, व्हाट टू डू फ्रॉम देयर, एंड आई एम श्योर यू विल हैव ऑप्शंस एट द एंड ऑफ द ईयर. मेक श्योर दैट जो भी इंटरव्यू ऑप्शन आते हैं उसके लिए यू डू प्रिपेयर रियली वेल. एंड फाइनली जो भी तुम्हारा बेस्ट कॉलेज होगा ना, दैट वो वी कैन ऑल्सो डिस्कस, और यू कैन डिस्कस इट विद योर मेंटर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, सबके डिस्कस करके यू कैन टेक अ कॉल कि ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. But till then, no decision. Keep on preparing, keep on working hard the way you have been doing, and I'm sure you will do well. Okay. So the last couple of questions, then I'll just show you the PPT because I had put in a lot of effort into making this PPT, but we have covered most of these questions in the session. So I think the PPT need not be shown entirely as well. Okay. If we do 2 degrees like engineering and other non-engineering degree, can we present non-engineering degree at the time of admission? Rohan, technically yes, you just need to be a graduate. If you are a double graduate, then one graduation will do. So sometimes people do that, right? उनका 50% से नीचे होता है in graduation. So people might go for another graduation stream, distance learning या जो भी करके करेंगे, and then they will try to get 50% के ऊपर in that, and वो दिखा देंगे as a part of their candidature. So that is something that can be done. But again, अगर गैप है दो चीजों के बीच में, they might ask you भाई ये गैप क्या है, यहाँ पे क्या किया था, and somewhere down the line you will have to spill it out that you also did engineering. तो वो कैसे हैंडल करते हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू कैन डू टेक्निकली, यस यू कैन. आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम बीइंग अ मास्टर इन केमिस्ट्री टू एमबीए, and you saw my profile and I have done MBBS. How do you justify shifting the interview? Okay, again, I'll have a detailed video on this on how to handle the why MBA question a bit later during the interview season. तो वहाँ पे मतलब definitely something that we can discuss. Rohan, yes, you can do that and you can take advantage of the non-engineering degree, but
अगर दोनों साइमल्टेनियसली किए हैं तो यू माइट स्टिल बी एबल टू कवर इट समहाउ, बट अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली यू माइट हैव टू जस्टिफाई कि भाई वो 4 साल में क्या हुआ था. So that is something that you will have to think about. ठीक है. Abhigyan, I will do a detailed thing on that. But see, the point is, the whole premise of my answer was, there are two aspects on which you generally rate your decisions, right? Or you take decisions. One is ability, the other is motivation. You can be motivated to do something, but you are definitely not good enough to do something. Let's say playing a sport. तो कल को if I decide कि मेरे को golf खेलना है, let's say for example, ठीक है. I watched MKBHD का वीडियो 2 days back and I got really excited about the technology in golf and मेरे को लगता है मेरे को golf खेलना चाहिए करके, right? And I don't know if anybody has watched it, but it's a really interesting video. If you want, you can just check it out. ऐसे ही shout out दे दिया मैंने because I was just watching it yesterday. Anyway, but let's say for example कि मेरे को golf खेलने का है, but I am definitely not good enough to play golf at that level जहाँ पे it is expected. So will I play golf? I'll definitely not play golf. Similarly, I am really good at doing something. I am very good at जो भी मतलब आई एम वेरी गुड एट राइटिंग लेट्स से आई हैव वेरी गुड कैलीग्राफी स्किल्स व्हिच आई डोंट बट लेट्स अज्यूम दैट आई हैव तो अगर मेरे पास बहुत अच्छे कैलीग्राफी स्किल्स हैं डू आई लीव माय फुल टाइम जॉब एंड बिकम अ कैलीग्राफर right again I might not be able to reach the same level there that I am at my job so ability and motivation will dictate your decisions in life you have to be high on ability you have to be high on motivation अगर ability या motivation में से एक भी चीज मिसिंग है ना तो you will not be able to do justice to your role and that was basically what I said कि आई माइट हैव बीन अ गुड डॉक्टर बट मतलब हाँ ठीक है मतलब मेरे को वो मोटिवेशन नहीं आता which I get from maybe leading an organization towards a collective goal, making the optimum use of resources, problem solving. ये सारी चीजें in a dynamic environment, I think I'm much more comfortable doing that compared to looking after patients and playing that slow game. तो वो दो कंपैरिजन के अंदर यहाँ पे मेरा मोटिवेशन लेवल कम है ऑल्दो मेरा एबिलिटी लेवल इज गुड माय मोटिवेशन लेवल्स आर स्लाइटली लो हियर एंड आई कांट रियली प्ले विद पीपल्स लाइव्स राइट सो आई विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ लाइव्स बाय नॉट प्रैक्टिसिंग दैट वाज बेसिकली माय पिच इन द इंटरव्यू एंड पीपल सीम टू लाइक इट तो ठीक है इतना क्रूडली नहीं बताया था थोड़ा अच्छे से बताया था बट हाँ बताया था राइट -2 to +8 in that range no improvement so 3 marks is not really a benchmark pratham so you'll have to do much better than that so ट्राई टू डू इट फॉर अनदर 5 मार्क्स और हर 5 मार्क्स के अंदर ट्राई टू गेट दैट 8 तो 8 मार्क्स मेरे को चाहिए इन 5 consecutive मार्क्स 8 मार्क्स मतलब कैसे रहेंगे मेरे पास मैं 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ मैक्सिमम मेरा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है बस उसके नीचे मेरे को जाना ही नहीं है आई शुड नॉट स्कोर बिलो 8 इन एनी ऑफ माई नेक्स्ट फ्यू मार्क्स ठीक है तो नेक्स्ट 4 मार्क्स दे देना 3 मार्क्स देना चाहो 3 मार्क्स दे दो 3 के पीछे 3 मार्क्स दे दो एंड एंश्योर दैट आर सॉल्विंग ओनली 4 क्वेश्चन इन दिस थिंग ओवरऑल तो ठीक है आई एम टेकिंग अगेन सेक्शन लेवल हर एक सेक्शन के अंदर ट्राई टू सॉल्व 2 or 3 क्वेश्चंस दैट्स इट उसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही मत कर ठीक है आई अज्यूम दैट यू आर सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस उसमें से बहुत सारे गलत हो रहे हैं मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग नेगेटिव्स एंड ऑल बट ट्राई टू सॉल्व ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन ट्राई टू गेट दोस 20-25 मार्क्स डबल डिजिट में जाना चालू कर देना once you get into double digits I think your journey will become slightly easier you will know what it feels like to score in double digits यहाँ से suddenly if you start thinking about 60 and 70 तो बहुत दूर हो जाएगा वो you might not be able to get it but make sure that you are doing these things consistently ठीक है Shubham again something we have in the pipeline but I have limited bandwidth as of now so telegram group where we can directly connect with you and receive suggestions for practice on a daily basis I'll try to do something but can't promise anything so but again a good suggestion I would not say it's a bad suggestion 95 percentile 8 cap calls ठीक है 15 months work ex no, so just Janur, you have to focus on mocks. 95 percentile के आगे there is very little in terms of concepts that you will need, right? Maybe 10, 15, 20% of concepts you might need to be better at, but otherwise mostly your preparation is going to come through mocks. Keep at it. Try to take as many mocks as you can. Keep your options open as I mentioned earlier. Uh, cap calls again. I'm assuming you applied only to IIMs or had only one good day at the CAT. But ZAT, SNAP and MAT सबको देख लेना मतलब cap के लिए if you were ready ना you should have also been ready for NSIBM, SMHRD or NMIS मतलब वो level पे I'm thinking. Of course, if you genuinely believe you have it in you to get a 98, 99 percentile, also apply to an MDI kind of a college or an IFT kind of a college. Try to take these at XLRI को target कर लेना. All these colleges once you target FMS, let's say for example, तो ये सब मतलब you should ideally be able to target in this attempt. But mocks के अलावा I would not really suggest you to do anything else. Try to keep on taking mocks. Try to keep on maintaining at least a 90, 92, 94 percentile at each mock.
तो ऑन गुड डेज यू शुड एक्सपीरियंस एटलीस्ट 199 परसेंटाइल। तो कम से कम एक 99 परसेंटाइल ओवरऑल यू शुड एक्सपीरियंस ओवर द नेक्स्ट मंथ, कपल ऑफ मंथ्स और सो। एंड ओवरऑल ऑन इवन ऑन अ बैड डे यू शुड नॉट फॉल बिलो 90%। तो वो एक डिफेंसिव गेम भी अच्छा होना चाहिए। You keep on doing that, I'm sure your percentile will increase from 95 to at least a 97, 98 तो पहुंच ही जाएगा for sure. And with that percentile, you can target a lot of better colleges as well, right? Say an IIT Kharagpur, BSc CS, right? Okay. So maybe any of the non-IITs as well. तो ये सारे colleges you can easily target with a 97, 98ish kind of a percent. ठीक है, alright. So on that note, I think I'll close the session. I'll just go through the PPT once and show you what all was there. So can I crack CAT in 5 months? So as I mentioned earlier, yes, definitely possible. Even if you ask me in the month of November, I will say definitely possible. But 5 months may it is the chances are pretty good. If you want to crack the CAT, you will need some basics in place, yes. But कर सकते हैं crack CAT in 5 months. The detailed video will be up by Tuesday, Wednesday, Thursday. I think one of these 3 days आ जाना चाहिए. So then you can have a look at that. Okay. Profile is 776. Can I get an IM? So we got that query in the chat as well. Definitely possible, but also keep your eyes open for other top B schools which are non-IMs. My accuracy in the VA section is very low. On any tips to improve? So one, I will be coming up with a video which will talk about how to select the right option. The questions का we had done. Now how to select the right option is the next video on in VARC. तो वो करेंगे. Plus you have to be absolutely certain of your answers. And second thing, you have to keep on डिस्कसिंग योर आंसर्स इधर विथ योर सेल्फ और विथ पीपल। जब तक वो डिस्कस नहीं करोगे ना, वो थॉट प्रोसेस नहीं सिंक होगा। यू विल ऑलवेज बी थिंकिंग इन योर क्लोज ग्लोब वाला वो एनवायरनमेंट, उतने में ही सोचते रहोगे। यू विल नेवर बी एबल टू एक्सपांड योर थॉट प्रोसेस। और जब तक वो एक्सपांड नहीं होगा ना, यू विल नेवर बी एबल टू थिंक अबाउट द ऑथर। यू विल कीप ऑन थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। वन फाइन डे अगर ऑथर आप से सोचता है, यू विल गेट इट राइट। वन फाइन डे द ऑथर थिंक्स ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर थिंकिंग, इट विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? सो वो नहीं होना चाहिए। यू हैव टू ओपन योर माइंड। तो उसके लिए अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो जितना हो सके ट्राई टू रिकॉर्ड योरसेल्फ, योर वॉइस एटलीस्ट व्हेन यू आर सॉल्विंग वीआरसी क्वेश्चंस, एंड देन यू हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन एंड कंपेयर। कि अरे मैं तो इस चीज पे ध्यान दे रहा था, बट सॉल्यूशन में तो ये वाले चीज पे ध्यान दिया गया। सो दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू। I get stuck on LRDI sets even after practicing more than 100 of them. 100 is just a number that I have put here. But again, the point is for you to be able to solve one or two sets in 40 minutes. That's it. वही अपना वो goal है। You also know that every set is going to have only one answer. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज उसका आंसर 15 होगा, कल 14 भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, 15 ही आंसर होगा, राइट? So you have to just crack the puzzle and come up with the answer. उसके लिए you need to be very good at cracking puzzles, dealing with ambiguity and so on and so forth. तो वो सारी चीजें कर सकते हैं। So make sure that you are doing that. LRDI का set selection video is going to be up tomorrow. So have a look at that video. वहाँ पे I have covered how to select sets in detail and things that you should be doing going forward in terms of LRDI. I'm poor at maths. Is there still a chance of a 99 percentile? Yes, definitely. There's always a chance. वो कितना बड़ा है छोटा है डिपेंड करता है how much affinity you have towards numbers, uh, how willing you are to improve, how willing you are to see days जहाँ पे you are going to perform very badly, but then again you are not losing confidence. तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं in this context. 99 परसेंटाइल का चांस अभी भी है। 99 परसेंटाइल ट्रेडिशनली अगर क्वांट सेक्शन में देखोगे, लास्ट ईयर was definitely a different thing altogether. But out of 66 marks, अगर 30-35 marks तक भी आ रहे हैं, तो you will get a 99 percentile, which basically means you are solving 10-12 questions more or less every year. उतना करना is not difficult. 5 महीने के अंदर इतना कंटेंट बिल्ड कर सकते हैं कि 12 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। So definitely that is on. Can I get into ABC? It's my dream and I don't want to get into any other college again. So इसमें मेरा एक फेवरेट लाइन है which I tell people, you cannot reject something that you don't have. ठीक है? So ऐसा नहीं है कि आपको FMS ने, एक्सेल आ रहा है ने, लखनऊ ने सबने कॉल दिया हुआ है और आप बोले नहीं नहीं मेरे को ABC जाना है। नो, no college has given you calls yet. You can't reject colleges at this point in time. Right? So make sure that you are keeping your options open. The beauty of this journey is that you have your options open. यार मतलब आज मेरे को सिलेक्ट करना ही नहीं है। It would have been problematic अगर मेरे को आज कॉलेज सिलेक्ट करना होता। ठीक है, अगर आज बोला था कि भाई ABC को अप्लाई करने के लिए ना, आपको हर एक कॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपको 1-1 लाख रुपए लगने वाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ऐसा कुछ होता, देन यू वुड हैव बीन इन ट्रबल कि यार सिलेक्ट तो आज ही करना पड़ेगा, कुछ तो मेरे को गैम्बल लेके सिलेक्ट करना है। देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्रोपोजिशन ऑल टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यू डोंट हैव टू पुट 1 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस टू सिलेक्ट अ कॉलेज। ऐसा नहीं है। कमिटमेंट कितना होगा? 1000-2000 रुपए का होगा। आई नो इट्स अ सिग्निफिकेंट सम फॉर मेनी ऑफ अस एज वेल, बट it's a price that you have to pay for a better फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, तो वो उसके लिए मेरे को पे करना है, विच इज
अनफेयर बट इट इज देयर, ठीक है, वो भी उसका अलग डिस्कशन है, बट इट्स अ स्मॉल प्राइस टू पे, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो अभी के लिए मतलब सब कॉलेज रिजेक्ट मत करना, अभी के लिए हैव अ लिस्ट ऑफ 10-20 कॉलेजेस दैट आर रियलिस्टिकली पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, और कुछ जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर मेरे को एबीसी चाहिए, आई हैव टू हैव एटलीस्ट अ 998 इन माय 10th 12th ग्रेजुएशन, आई नीड टू बी डूइंग एक्सेप्शनली वेल एट माय मॉक टेस्ट, मैंने एक तो टॉप 100 या टॉप 50 रैंक देखा होना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर। अगर वो सिनेरियो है देन हाँ, आई कैन से कि एबीसी मेरे लिए पॉसिबल है करके। बट ना मेरे एकेट्स अच्छे हैं, ना मेरे मॉक्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ना आई हैव ग्रेट एक्स्ट्रा करिकुलर्स, मतलब कौन से बेसिस पे मैं सिर्फ एबीसी को कमिट कर रहा हूँ, राइट? सो थिंक रियलिस्टिकली इन दिस कॉन्टेक्स्ट and make sure that you are targeting as many colleges as are realistically possible for you, and then when it comes to the month of March or April, take a call ना, छोड़ दो कॉलेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I left JBIMS one fine year, I did not turn up for MDI का इंटरव्यू one fine year, I did not apply to SPJMR in the first place। तो ये सारी चीजें मैं कर चुका हूँ अपनी लाइफ, right? But I decided at the end of April that I did not want to pursue any of these options। वहां पे मैंने डिसाइड किया। I did not decide पहले and took only CAT, वैसे नहीं किया मैंने। I taken all tests, right? So हर साल ये चीजें करती रहनी चाहिए। You keep on taking all the tests that you can. Look at the institutes that you have in hand in the month of March or April, then take a call। अभी बिल्कुल ये सोच के मत जाना कि कौन सा कॉलेज मिलेगा। Although I reply to a lot of you, but this is something that I generally tell people कि उतना प्रेशर मत डालो कि यही कॉलेज में जाना है, because then what happens is with every incorrect answer that you get, your confidence keeps on getting hit, और वो हमें बिल्कुल नहीं होने देना, ठीक है? Cat looks difficult to me, इसका opposite, can I look at only the snap? So someone spoke about CET and I went on a rant। Again, this is the question that I was expecting। तो अब बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अरे ये डिफिकल्ट लग रहा है तो आगे शिफ्ट कर दे, वो डिफिकल्ट लग रहा है और थोड़ा आगे शिफ्ट करेंगे, एंड सो ऑन, एंड देन यू रियलाइज करे कैट में ही मेरे को सबसे अच्छा, मेरे को 75% मिला था कैट। अगर मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेता, आई माइट हैव गॉटन 85% टाइम, एंड दैट वुड हैव गिवन मी बेटर अपॉर्चुनिटीज देन व्हाटएवर आई गॉट एट दी स्नैप एंड मैट, सीईटी, सीयूईटी एंड सो, ठीक है? तो वो हमेशा वो यहाँ पे है तो आगे वाला इजी लगेगा, आगे जाएंगे तो पीछे वाला बेटर लगेगा डिसीजन। सो डोंट डू दैट काइंड ऑफ अ थिंग, अपीयर फॉर ऑल द टेस्ट्स एज इफ दे आर गोइंग टू बी द लास्ट टेस्ट दैट यू आर गोइंग टू अपीयर टू। उसके बाद कैट कंडक्ट ही नहीं होने वाला, उसके बाद एनमैट कंडक्ट ही नहीं होने वाला। सो गो विद दैट माइंडसेट and try to appear for all these tests, and try to get as many marks as you can, and that will definitely help you do better overall, ठीक है? So that is basically the gyan that I had. And of course, I see many of you here who have been attending the daily drill that we have floated over the last couple of weeks now. So we are already done with 10 daily drills. What we do in daily drills is we will float a test for you the previous night. So 10 o'clock को let's say the test goes live. तो वो 10 से लेके आगे कभी भी you can take the test till cat will be able to take the test. But it is recommended that you take the test over the next one day, and in the evening at 8 p.m. I will come up with the solutions for that particular test। तो वो live session होगा जहाँ पे you can interact, कुछ समझ में नहीं आता you can let me know, if you have a better method you can share that as well। तो वो सारी चीजें we can discuss in the evening। So every evening 8 p.m. onwards, 8 to 9, 9:15 generally, is going to be the daily drill। So 5 days a week, Monday to Friday, we are doing this daily drill। Again, the link to the daily drill will be in the description box below, so have a look at it। You can take the test on a portal that we have created for you, and you can look at the solutions by visiting the live sessions that we have scheduled already। So have a look at the daily drills, that those will be beneficial to you। It's like a daily practice every day for all of you। And we also discuss some shortcuts, some concepts that will be there। तो वो चीजें भी हम लोग कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है? So have a look at those, and yeah, I think you should be fine। We have a lot of videos coming up in the pipeline आगे जाके भी। So those will help you strategize well, choose answers in a better manner। So make sure that you are doing everything, मतलब consistently उसको देखते जा रहे हो। And अगर कुछ याद नहीं रहता तो वापस पीछे आके देख लो, because you tend to gather a lot of information and then forget about it। तो वो don't do that, be consistent in your entire journey, and I think you should be fine, ठीक है? um नीला ब्रो, 12 in DLR, 15 in quants। So quants, Nilabur, I can understand because a lot of mock tests would be made difficult considering CAT 2023 का difficulty in mind, and वहाँ पे 15 was a decent score। You can be slightly more aggressive, I believe, in quant at least। So wherever you are taking those half chances, now I'll recommend you something opposite of what I have recommended to the others, because you're already at a decent level in VARC। तो quant के अंदर be a bit more aggressive, थोड़ा half chances ले लेना, maybe guess one or two answers and see how it goes। And you have to get that 30 का score in quant once you have tasted blood, you know what it feels like। फिर उसके बाद you will be able to maintain that 30 very easy। बट एक बार वो मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। DILR के अंदर 12, मतलब आई एम अज्यूमिंग यू आर एबल टू सॉल्व ओनली वन सेट, अभी के लिए इट्स फाइन।
try to solve that one set slightly quickly so that you have more time, 25 minutes to solve another set. Third and fourth set को हाथ भी मत लगाना. Try to solve only two sets and try to handle it that way. वैसे करके I think your attempts should improve, but it's just a matter of being able to do two sets consistently over three consecutive mocks. बहुत confidence आएगा. And 10 questions in quant consistently over three consecutive. ये दो चीजें अगर तीन consecutive mock में कर लो ना, even only DI, only quant वैसे करके, तो भी you should be fine. तो go with that mindset कि I'm going to attempt 10 questions this time. And attempt those 10 questions. थोड़ा half chance है तो भी ले लेना. Try to get those 30 marks. Create a situation जहाँ पे 30 मिल सकता है. If you're attempting only 6 questions, you will never be able to get 30 marks. ठीक है? तो attempt those 10 questions. That will allow you a shot at getting a 30. One fine day you will hit a 30, and that is basically the day when you will evolve. So that is basically what I would do if I were in your place. ठीक है? Sure. Neela bro, algebra, so I think I'll be doing something. So let's see. And those daily drills, I think, should help in terms of algebra. As we go ahead, it will become slightly more difficult. And again, algebra ka perception that it is difficult is built on only 1 year ka experience, right? So 2023 एक ही साल था जहाँ पे algebra was difficult. And on the basis of that, everybody is sort of overreacting, is what I would also say, and making algebra difficult. And फिर जाके पता चलेगा कि algebra difficult था ही नहीं, something else will come difficult this year. एंड वो फिर विल अगेन कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? तो ये जनरली होता है. वी जनरली टेंड टू थिंक रेट्रोस्पेक्टिवली. Because CAT 23 का algebra was difficult, I will create difficult algebra mocks this year. Fair enough. I'm not saying it's bad, it's wrong or something. But then again, you have to be mentally prepared for that aspect. That is my Nilamro, definitely yes. So 35, 12, and 15, 62. 62 should definitely take you above 95 percentile. If you look at the actual CAT as well. So don't worry about it. I think you can definitely get a 90. ठीक है? Chalo. So on that note, I think we'll close the session. It went on for longer than what I had anticipated, but I'm really happy with the turnout and the and all of you who came to sit for this session. And I hope I have been able to answer all your queries in a manner that will help you plan for the next 1 month or so. We'll try to keep on doing these kind of sessions regularly so that we can have interactions beyond the daily prep sessions that we are doing. So that should help all of us. All right. So yeah, thank you everyone and have a great Sunday ahead of you. Have fun, relax a bit, and then from Monday you can start your preparation again and have a look at the channel. Do stay subscribed if you haven't subscribed yet, and do share it with all of your friends if you believe it's going to help them crack the tests that are there in this season. If you like the video, do like the video, do give us a thumbs up and do put it in the comment section as well. If you have any doubts, any queries, I try to reply to every comment that I get. And yeah, that's basically all that I had. Yeah, Sakshi, for medicos preparing for CAT 24, nothing changes, Sakshi. Everything remains the same. You are as good or as bad as an engineer when it comes to preparing for the CAT. So all things remain the same. Math may you might have some difficulty, but of course there's nothing that can't be overcome. I come from a non-math. I come from an MBBS background, and I regard math as my strongest subject, right? So that is completely up to your affinity towards numbers and maths in general. तो nothing changes in terms of preparation. आगे जाके इंटरव्यू वगैरह के टाइम पे थोड़ा प्रिपरेशन चेंज होगा, तो दैट इज समथिंग दैट वी विल डिस्कस एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम. But for all non-engineers, the preparation absolutely remains the same in terms of structure. Quant might require slightly more uh, focus, but otherwise everything remains the same. ठीक है? चलो. So on that note, I'll close the session. Thank you everyone for turning up, and I will see you again tomorrow in the evening for the daily drill session. Tomorrow's daily drill is going to be on verbal ability, and I think it will be live tonight at 10. Okay, so have a look at that, solve it, and I'll see you again tomorrow for tomorrow's daily drill. All right, sure. All right, bye everyone.